Roll number 25. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Read करा sir बाइट. Okay, sir. Okay. Good afternoon, all participants. I thank Gaurav sir for giving me an opportunity. Today, here with we have Dr. B.Sudha over here, the renowned personality, professor of Department of Pediatric Nursing. She is working presently at Vinayak Mission College of Nursing, Puducherry, India. So, B.Sudha ma'am has more than 15 years of experience in the field of nursing. She is specialized in pediatric nursing and uses different pedagogical approaches to the teaching learning processes. She is interested in training the teachers on learner centric methods. She has been also a team member in one of the NPTEL courses and TEQIP courses. She has been a resource person to various universities in India for FDPs, short term courses, and also the development of LCM model. She has also presented papers in conferences and seminars. Her research interest lies in the area of neonatal nursing. Currently, she is working as the professor at Department of Pediatric Nursing in Vinayak Mission College of Nursing, Puducherry. So I welcome ma'am over here to this ICT course from on behalf of BAMU University. I request to present her presentation and please guide us. So over to Sudha ma'am. Thank you, sir. Thank you for the brief introduction. Let me share my screen. Yes, ma'am. Sir, is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. Yes, ma'am. So, in continuation of the session, like LED, you would have had the sessions on LED, LBD, LXT, and now we are going to see about LXI. So, you have seen the LCM model. So, what understanding you have about LXI? What comes to your mind when I say learner experience interaction? Discussion session. Pardon, sir? Discussion session. Discussion. Okay, discussion is going on. So, there is an interaction which is going on among the participants of a MOOC course, or we can say that even in the classroom discussion or in the classroom also, we can have a discussion. So, the types of learning interactions in an online course. So, what are the types of interaction that we will have in an online course? There will be interaction with the content, which means the learner will have an interaction with the content. Say the learner may be watching a video, or he may be reading a textbook or a material. So he has an interaction only with the content. And there may be also an interaction that is taking place with the instructor. So how does this takes place? When you have an interactive video sessions, a video which has got interactions. Say you have some multiple choice questions in between where
the participant has to answer for that question, and then only they can move on to the next part of the video. So that way you have a learner instructor connection, or you have an interaction with the instructor also. And in another way, like when you say an instructor interaction, in the live sessions which are taking place, most of the online courses now have live discussions which are taking place. So in that case also you have a connection with the instructor in the form of learner-instructor interactions. And you also have what is called as learner to learner, which means a participant is getting connected to another participant. It may be an individual or it can be a group of learners, right? So in an online course, uh, getting connected to another learner, is it possible? Is it possible to have a connection or to have an interaction with another participant in an online course? Is it possible to have an interaction? A learner to learner interaction? Dear participants, dear professors, dear friends. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes. So is it possible to have a connection between a learner and a learner? Yes, ma'am. Yes. Possible. How is it possible? Then through chat. discussion forum, through peer Discussion review forum? process, peer Yes. review process, peer review Peer assignments, review questions, peer review assignments, peer review assignments. So when you have a common group, there are possibilities like we can have a connection with the peer group members, right? So in an WhatsApp also we can find their mobile numbers, or we can get their mail IDs, and by the way we have a connection with the other participants. So what are the benefits when you have a connection with the other people? Ma'am, So we can now, get yes ma'am. we can get ideas. You can get ideas, you can have new perspectives, Yes. you can have collaborations with them. Say if they are from your same domain, then you will be more happy to have your interaction with them, right? So even though there are diversified learners in an online learning environment, we seek to find out our domain people in the online learning environment, right? So we feel happy and we may get connected with them, and we have rich collaborating experience with the learners, right? So the reflection spot here is, why is learner-learner interaction important in an online learning environment? So just write two importance, or one, why is learner-learner interaction important in online learning environment? Just type your responses in the chat window. Just take 2 minutes. For a healthy discussion, yes. Diverse opinions and perceptions, to seek help, yes. So enhances communication, builds community, very good.
So you have come up with the importance of learner-learner interaction in an online learning environment. Let's see what are the points that has come out. So the benefits of the learner-learner interaction. So it ensures learner centricity. So the meaning for learner centricity is you are actually making them to engage the students and have an interaction with the learners. So you are ensuring that the participants are actively involved in the learning process, right? So we create content based on the learner centricity. But the point here is whether they are actively engaged and involved in the learning process. So that is actually we have to ensure the learner centricity. And when you see in general in MOOC courses, hope many of you would have attended the MOOC courses, and some of you may have been developing the MOOC courses also, right? So when you are involved or when you are being participated in the MOOC courses, some of you would have experienced, like there may be, you may feel a sense of isolation, right? Because you alone will be sitting and learning something and nobody is there to discuss something along with you, right? When you have some, when you need some clarifications also, you may not be able to ask, you'll be under confusion to whom to ask, where to ask, like, no? So you may be having that feel. So now, when you have a learner-learner interaction, it removes the feeling of isolation. And naturally, it creates a connect with the peers. So when you have a learner-learner interaction, you have a connection with the peers. So that, how to say, a sort of emotional connect will be there with the peers, instructors, and the course. So you also have or you develop an interest to the course. So when there is an interaction, you wanted to know what other people are saying. What is my point? Is there uh, any contradictory statement against my discussion? Like, no, you have a interest to go into the course and see what is happening in the discussion. So actually, it creates a connect with the peers. So you might be knowing that there are diversified learners in an online course where one may be too young and the other one may be very old, right? So their perspectives or their content may be different from what you are perceiving, right? So that way you get connected with the peers, especially if there are people from the same domain, and it provides scope for the learners to express their ideas. So it is an open forum where you can openly discuss your viewpoints, right? So nobody is going to say that it is right or it is wrong. So what is your perspective that you're going to comment over there, right? And it exposes all of them to experience the diversity. There are like, no, you expose or you are being exposed to a different people who are in a diverse group, right? So you have that experience also, even though there are not much people of your domain, but you celebrate the other diversities also. So that is a benefit of learner-learner interaction. So, what are the challenges that you face in an online MOOC? Can I have some answers in the chat box? What are the challenges that you will be facing in an online course? The challenges that different times for interaction. Dr. Amit said face-to-face communication is not there, okay? Not all online. Not all online.
Roll number 34. Can you elaborate on that? Not all online at a time. Roll number 34. Can't unmute. Okay, sir. So here, no, like what I meant is, not everybody can interact in an online mode. In the self-paced courses, whenever you have time, you just go, you enter into the course, and you have the uh, chance of interacting with the participants whenever you have time, right? So similarly, the other people will also have their own time to come and discuss with their viewpoints, right? So everybody can interact. Concentration of participants can't be observed. Yes. And for this point, no, nowadays the technology is coming up, right? So how much of time the student is spending, the participant is spending on the video? Are they skipping the video? They are watching their, sensors are being given up. Like there are sensors to see your eye movements. So based on the eye movements also, they are just seeing whether you are seeing that video and how much time you are spending on that video, whether you are skipping the video. So all these things are also being observed using the technology. So okay, yes. So there are technical difficulties assessing students' understanding. So all these challenges are there in an online learning environment. Yes. Good. So, in order to address these problems, right, you have low participation in an online course, right? So, when I say low participation, when you are enrolling into the course, so there may be around, say, 1,000 members or around 750 members in an online course. But as the days goes on, how much people register for the exam and how much people appear for the exam, that number is getting decreased or declined. So that is happening because there are there is low participation of the participants. So that happens when there is not much interest towards the course. And this interest can be obtained by having a peer-to-peer interaction. So that challenge can be addressed by learner experience interaction. And some people know they will use the discussion forum only for clarification of doubts, right? Say for example, when is the exam or when the hall ticket will be issued? So when is the next week question answers will be released? When is the answers will be released, right? So for the clarification of their personal doubts only, they will be raising the questions in the discussion forum. And even though there is an interaction, it will be very short also. And when you look at the MOOC forum, the discussions are all scattered. One people may raise a discussion about something, the other people will have a discussion about something else, right? So it is all scattered. It is not anchored towards a one focus question. And finally, you could see there are no peer connection which is existing among the learners. So to address all these challenges, we have what is said to be of the learner experience interaction or achieving the learner-learner interaction. So the challenge is lack of participation. And now, what is the shift that is going to take place in an online learning is peer learning through focused discussion. So there is going to be a peer learning, which means like how we are going to enhance this peer learning through focused discussion. So that we are going to see about. So that is what is said to be of learner experience interaction. So this model, LCM model, you would have already known about this. Like you have what is said to be of learning dialogues, which is LED, which has the content as well as the reflection spot. And the LBD, which is learning by doing, which has got the activities, plus you also have a customized
feedback. And in the morning, you had a session on LXT, that is learner extension trajectories, where you have the resources for diverse group of learners, which is followed by an assimilation quiz. And now it is LXI, which is learner experience interactions. So here you have what is called as a focus question for a discussion, which will trigger you to the peer interaction, and that will be followed by a reflection quiz. So that closes the loop of learner experience interaction. We'll see in detail. So this is the dynamic of learner experience interaction, where you have the instructor who creates the content, who creates the focus question. So this focus question, what is the focus question? Now the focus question is, it is a question is focused or which has been posted based on the LED for that particular week or based on the LBD of that particular week. So based on the LED or LBD or based on the topic that you have discussed, the focus question will be erased or the focus question will be posted. So this is posted. Why? Because it's to elicit the diverse learners' view. So what other people are thinking or what is their perspective. So in order to elicit that, you post a focus question. And this focus question, for this question, the students have to respond to each other post, and it is called as the discussion thread. This focus question will be answered by the participants. Either the participant will respond to this focus question along with participation or answering for the other people's post also. The other learners' post also, they will be commenting or they will be giving their explanation for the other person's discussions also. So that is said to be of a discussion thread. Now this discussion thread, this is for steering and regulating the points so that it is not getting scattered or it is not going away from the topic. So this focus question, we are choosing it based on the topic, and that drives to the discussion thread. And this discussion thread is where you are monitoring that it is not deviating from the topic, and you are also steering and regulating, in the sense when there is a participation from a learner, you have to see to that it is not stopped or the discussion is not getting ended with a one-word answer or with one person answering for that or giving comment for that particular post. So we have to steer the discussion so that rich discussions are coming out of the other people's post also. So when I say a rich discussion, when a person or when a participant is answering for a focus question, that should not be ending. It has to further lead to the next step of discussion. Say for example, when there is a question like what are the challenges you have in an online course? So the people who are monitoring or the instructor who is monitoring the discussion thread, now they will be again asking questions like you have said about low participation. Can you now say how this low participation can be addressed, right? So that way you are going to make the discussion much more richer. So the participants will take more takeaways in a discussion forum, right? So this is said to be of a discussion thread, which will be followed by a reflection quiz. So this reflection quiz, it is a graded activity, like they have to answer related to their experience in the forum. So what is their experience in the discussion forum? So based on that, they will have to answer for the reflection quiz. This is a graded activity that is mainly to incentivize the participation in the discussion.
And this discussion thread again, there will be either an individual learner who will read the discussion, or there will be a group of learners who will read the discussion, and they will also participate in the discussion. So in order to answer this reflection quiz, you will have to participate in the discussion thread. Otherwise, you may not be able to answer for the reflection quiz. So at least for answering this reflection quiz, the participants will go through the discussion forum and they will also participate in the discussion thread so that they are able to answer for this reflection quiz. Right? So this is the dynamic of learner experience interaction. Any doubts so far? Hope it is clear. If it is clear, just give a plus in the chat so that we'll go to the next. Yes, there are 2 people. Yes. So this LXI, it is not that it is applicable only for an online course. This can also be done in a classroom scenario also. Like, no, we have a WhatsApp group. So we can also, in the WhatsApp group also, like we can form a discussion thread and we can post questions, ask them to share their experience, and finally we can give them a reflection quiz so that we close the discussion, right? So that way we can have an interaction even in the classroom environment also. So now, and whatever experience we are creating or whatever engagement we are doing, it should be of a meaningful discussion, right? It should have a peer learning. We have to establish a peer learning, and that should be of a meaningful discussion also. Right? So how do you design an LXI activity? So an LXI question will have 3 components. One is the focus question. The other is how to interact with the peers post. And the third one is the reflection quiz, right? So how do you pose a focus question? Already we have said that this focus question should be around the topic. So whatever topic that we have discussed in the course, that is in the LDD or in the LBD, take that topic and based on that topic you create a focus question. And it should be clear with instructions for the participants to interact with the peers post, right? So how they have to answer for that question. So what sort of rules or regulations you are giving the participants to interact for the peers post. So you have to give them the instructions like how to participate in the focus question. And also we are directing the learners to respond to the reflection quiz. So you have to construct a reflection quiz, maybe 2 questions or 3 questions, and you can post it in the forum so that the people or the participants, they will have an interaction and then they will answer for the reflection quiz. So these 3 components should be there for a LXI question. So one is a focus question and the instructions like how to participate, and the third is answering to the reflection quiz. So here we have an example of LXI. So I said, like, no, we have to create a focus question. Now that focus question should be in such a way that it has multiple viewpoints. Like it should not be of a single word answer. Your focus question should not be of a single word question. Sorry, single word answer. It should not get only single word answer. It should elicit multiple viewpoints from the learners. So only you will have a good discussion, right?
So you should choose a topic in such a way that it has multiple viewpoints, and you pass a clear instruction and create an article. So this is an example. Like you can see, this is a focus question which has been taken up from the Swayam, that is MOOC on designing learner-centric MOOC. So here you could read here, you have witnessed the idea of videos getting converted to learning dialogues. So based on your experience of watching or creating the MOOC videos, how does the insertion of reflection spots benefit one as a learner? So now the topic that they have chosen is the reflection spot. So in this reflection spot, what are the benefits? So you will have many points to discuss. What are the benefits of a reflection spot? So that way we'll have to choose the topic. So if you have not experienced such interactive videos, then you may use the experience of reflection spots in this course as a supporting example, right? So in case they have they have enrolled in a MOOC earlier, they can take that as an example. Or if they have not experienced the reflection spot so far, then in this course, they can see what is the reflection spot and they can answer for it, right? And they can have an interaction with the participants. So what is the instruction? So we have constructed the focus question, and what is the instruction for discussion? So they have to identify posts from two of your peers where they have mentioned benefits different from what you have already posted. So you will be answering for this focus question. Along with that, you are also going to identify posts from two of the other peers who have mentioned the benefits that is different from what you have already posted. So you have to identify that post. So in order to identify who has answered differently, I'll have to go through all the discussions, right? So, and then post your responses to your peers post. So that way you will have to give some instructions for discussion. And you also create reflection quiz. So in the discussion forum, LXI week 2 focus question, post one of your peers has mentioned some uses of reflection spot. Which of the following are some of the points in this post? So already we have created the focus question. We have given the instructions, and there is a peer discussion which is going on in the forum. And as an instructor, we are also monitoring the discussion. So only when you monitor the discussion which is taking place, you will be able to create the reflection quiz. Without knowing what is the discussion that is taking place, we may not be able to create a reflection quiz. So what we have to do is, we have to manage the discussion forum. Like at least we'll have to spend 2 hours in a week to see what is the discussion and how is the discussion going. And we also have to regulate the discussion, and we'll have to see to that it is anchoring to the focus point, right? They should not get deviated also. So we'll have to make them focus on the focus question. So with all these points, we have to create a reflection quiz. So only when you know what is happening in the discussion, you can create a reflection quiz. Otherwise, we may not be able to do it, right? So from the discussion forum only, we are taking out the reflection quiz. So they have mentioned some of the benefits of the reflection spot. They have mentioned the name here, which is mask. So now, if I am going to be a learner, now I have to go see who is that person who has mentioned the uses of a reflection spot. So what is the answer that he has given? Then I'll have to check out what is the answer, right? So this activity will be graded out in order to incentivize the learners, right? So these are the 3 components. So one is the focus question, and second is the instructions for the discussion, and the third part is the reflection quiz. Any doubts?
So I have given a few examples of LXI focus question. So I said, like, no, we have to have a topic. You have to choose a topic for a focus question. So now you have an objective. So with the objective, what you want the learners to achieve at the end? You first have an objective. For that objective also, you can have a focus question. So now my objective is establish social connect among the learners. Now, how am I going to establish social connect among the learners in an online MOOC? For that, I have to create a focus question, right? So what is the focus question? Introduce yourself and tell us where you have encountered database in your day-to-day life. So this is from a course that is Relational Database Management System. In order to establish a social connect, first thing is, whenever some people enters the house also, we greet them, right? So whenever somebody is coming to meet us, we greet them. Similarly, in an online MOOC also, we greet them, right? So introduce yourself. Tell us where you have encountered database in day-to-day life. So just to make them acquainted with the discussion forum, first you have to familiarize them like how to participate in the forum and how to interact in the forum, right? So first for that, you just ask them to introduce. All of a sudden, if you ask some questions, there may be some hesitations. They will be thinking, okay, am I going to answer correctly or not? If something is going to be wrong, people will be, they'll be, what to do, like, they'll be teasing me, or they may be telling that, okay, even this also the person doesn't know, or like that, they may be teasing me, right? So just make them involved in the discussion by making them to introduce themselves, right? So this is my objective, establish social connect. And another example, so here my objective is to apply the concept that is taught in the real life. So I have learned about a concept, right? So how that concept has to be applied in real life. Now in the classroom, I have discussed with something. For example, here I have taken an example of recursion. So the computer people may be knowing about this recursion. So this recursion, I have taught them what is recursion, right? Now, how I am going to apply this in the real life? So I have to make the people or make the participants to be actively engaged in applying this recursion in the real life. So where all they will be applying. So I have to prompt them. My objective is apply the concept that is taught in a real life. Now for that, what is the focus question is, can you give an example where the recursion is used in the real life? And instructions for the participants, look at your peer post and comment on what you think about the usefulness of recursion in their example. So they will see the discussion that is taking place, and they will also say what is the usefulness of recursion in their example. So their application they would have stated, and from that, how that is being useful, that they have to point out, right? So that way the discussion will become a enriching one. And here was another example. My objective here is to explore a topic that is about to be taught. Here, the LXI can be created not only for the topic that has been taken, but also for the topic that is to be taught also, right? So, in this given example of simulation, so this is an example for simulation. So, they are asking, list the advantages and disadvantages of simulations as a teaching resource. So this has been taken from a faculty development course. Now an example of simulation is being given to the participants. From that, they have to pick out what are the advantages and disadvantages. So the participants will be writing about the disadvantages and advantages. And maybe the next question, where do you apply this in your real life scenario? And another example here is sharing of artifacts, projects created, and giving peer review. Some of you in the earlier session, they said that for peer review, interaction has been
used, right? Exactly. Now, for sharing of the artifacts or projects, right? So we ask them to create something and share it in the forum so that other people will be able to see and they will be able to comment on it, or those who are not aware of it, they will be able to learn from your creation, right? So sharing of artifacts and projects. So the focus question here will be create a paper prototype of your proposed mobile app and provide feedback on two other peers' prototype based on the checklist that has been provided. So that way, the participants, they will create their prototype and they will be posting it in the forum. And based on the prototype that has been posted, the participants will give their feedback. That is giving a peer review. So this is from a UI and UX design course. So hope now you are familiar with the creation of LXI. And one more example is, my objective is to reflect on the learning that has happened. So what is the learning that has happened? We have to recall or we have to reflect on what has been taught, and then I will have to answer for my question. So what were the takeaways for you from this course? And comment on two of your peers' takeaway post. So this is the way how we create a focus question. So in order to create this focus question, we'll have to choose a topic. We'll have to see to that it has multiple viewpoints and it has to be monitored, steered, so that it is not getting scattered. And finally, you create a reflection quiz and it has to be of a graded type. And just posting the question is not the teacher's job, right? So every week we'll have to spend at least 2 to 3 hours so that the learners are getting connected to the instructors. So they feel the connect, right? So actually this discussion forum is an enriching experience where you will get uh, a lot of experience and you gain almost like maybe you would have prepared for a 2-mark question, but you may be able to answer for a 10-mark question if you are going to participate in a discussion forum. So to that extent, it is of an enriching experience, and plus you will also have a community, you have a networking building. So all these things happen in a discussion forum. You may be thinking that, oh, what is that discussion forum? Why to participate, right? It is not that. There are people with different perspectives and different diversity of learners where you have an enriching experience. So with that, we complete the learner experience interaction, which is a space or it encourages the students in engaging in a meaningful discussion. It cultivates peer experience, peer interaction through focused discussion. So actually focus question is the one which initiates the discussion or it ignites the discussion. Now how do we design a focus question? You can design a focus question. First select a course. Now you are in your domain. You select a course that you teach and think of a topic that are covered in a week. Maybe the last week, whatever topics that you have covered, you can think of it. You can choose a topic which has multiple viewpoints and generate rich discussion. You can scan this QR code and now you can participate. You can take 5 minutes of your time and you can submit. Maybe you can take 5 to 10 minutes also. And based on your topic, write a focus question with clear instructions for the students on how to respond and interact with the peers, and submit your responses using this QR code.
Can you see this Google form? Excuse me. Is this Google form visible? Yes, ma'am. Yes. Yes, fine. So here you can write your participant or your roll number, which department you're from, and the topic for which you are designing the LXI. So I said you have to choose a topic, right? So just choose a topic. Here it is given as recursion and its application. An example has been given. Now you can write your answer. What is the topic that you are going to choose for designing an LXI? And the objective of your focus question. So here the example given is to apply the concept that is taught in the real life. So similarly, you can also write your objectives and the focus question, which includes the instructions for discussion. Can you give an example where recursion is used in real life? And look at the peers post and comment on what you think about the usefulness of recursion in their example. So you can create a focus question and you can write the instructions also for discussion and you can submit it. Have you taken this QR code? If not, I will again yes, you can take down this QR code, you can just capture it. If you have taken, just give me a plus in the chat. I want everybody to respond to this Google form. Once you have scanned, tell me yes Yes, ma'am. or yes. Okay, fine. Okay. Do you have any questions on LXI so far? Questions? हाँ मैडम बोला मैडम Yes, sir. Sir? Okay. I will move. Please share a link. Please give summary. The summarizing of LXI is you'll have to choose a course. From the course, you choose a topic, and from the topic, you take out a focus question or create a focus question around the topic. And for that focus question, you steer the discussion thread. After discussion has taken place, maybe at the end of the week, you can give a reflection quiz. From the discussion which has taken place, you create a question and you grade it. And that can be added to your score. So those are the three components. One is the focus question, second is instruction to the participants, and the third one is a reflection quiz.
I have shared the link in the chat. Rule number 13 has already posted some Google form link. Okay. One second. So now here, so what are the discussions that are usually taking place in an online courses? So this is a discussion pattern. So this is about week 4. So they have come to the stage of week 4. And you could see there is only one discussion which has come up, right? There are 4 views of it. There is only one discussion like, no, Eklachalo, right? Inviting alumni is a good idea and it will promote the entire course plan. Thank you. That's finished. So this is the only one discussion which has come up in the 4th week of the course. And there is no participation here also, right? There is only one person who has responded and there is no, from the instructor side also nothing, and from the participants also there is no discussion which has taken place, right? And if you look at the next post, so there are 21 views here, and there is 2 persons, one person has responded, and the next person also has responded to that post. So here we have who is called as the discussion forum moderator, the DFM. So they will be monitoring the discussion which is taking place in the discussion forum. So here you have 21 views, but only the discussion forum moderator only has answered for their questions. Rest of the participants, there is no discussion which is taking place. So this is the usual discussion pattern which is taking place in the online courses. And now here you have 25 views. At least there are 3 people. Now one, the participant, the other, the discussion forum moderator, and next only thank you. That's it, finished. The discussion has been ended. There is no further progress in the discussion, right? And here you have 75 views, and now there is a discussion now which is taking place, right? So a discussion forum moderator have created some posts, and the participants are now slowly answering for the questions. And there is another participant who has also answered for the questions which are related to the reflection spot. So now, in order to have a progress in the discussion, you see to that the questions are framed in such a way that it is not coming to an end. It should be progressing further in order to have a wider perspectives and wider experience in the interactions that is taking place. So 1 has become 2, 2, 3 and 4. So how do you manage this discussion forum? So you first create a forum management plan. So you assign
some roles and responsibilities for the TAs, that is the teaching assistants, for the instructors, and for the discussion forum moderators. So what exactly they have to do and how much of time they are able to spend. What is their convenience timing? Which date they are able to peep into the forum. How they will be participating in the discussion. So what if they are not able to answer for the queries? What is the next step, right? So you create a forum management plan and then employ a team of discussion forum moderators in order to manage this discussion forum. Like I could say from my personal experience that I have been a discussion forum moderator initially, and I have participated in almost 3 of the discussion forum moderators in discussion forum in designing learner-centric MOOCs for the 3 consecutive years. And I have also coordinated the discussion forum moderators. And so gradually, you will have a good experience when you have an interactions with the participant. You will come to know many people in the forum, right? So you can also, one of the best way to be employed or to be not employed, to be as a discussion forum moderator is we can invite the course alumni. So once the people who have completed the previous sessions, they become an alumni, right? So those alumni, you can invite them to be as a discussion forum moderators for your successive sessions. So they will know the complete content and they will be able to participate effectively. So as an alumni, I have been as a discussion forum moderator for the designing learner-centric MOOCs. And it is actually a very good course. And now the course is from the January session, it has been started. You all can enroll in the designing learner-centric MOOCs course. So how a discussion forum moderator have participated in the discussion forum. He is an alumni, and Dr. Vijayarama Raju, who is a discussion forum moderator, and how he actively participated in the discussion forum is a DFM of the course on the use of smart boards. There was a course on smart boards for quality improvement project, that is TechUp course, where he answered the queries of learners by creating a series of screenshots showing the exact steps. So he was able to create a screenshot like how to use the smart board. So step by step, how we have to, from turning on to turning off, and how we have to use the smart board. So like that, he has used a series of screenshots like to show how we can use the smart board. And he is also a discussion forum moderator of the course on the use of smart boards. So he created a repository of FAQs, that is frequently asked questions. So, and he also traveled more than 150 kilometers to create videos of frequently asked questions on the discussion forum. So there may be some questions which are coming up again and again. So for that, he exactly took a video on for the frequently asked questions, and that link he has posted it on the forum. So that way the discussion forum moderators are a tool, I can say they are as a catalyst, right? So they steer up the discussions. And also for incentivizing the participation, you create a hall of fame. So one who is very active in the forum, right? You can highlight their contributions as say, like there is post of the day 1 or post of the day 2, who has had a good discussion or who is actively involved in the discussion, like we can post them. So other people will have an interest to participate in the discussion. So highlight the interesting contributions and increase the learner motivation and engagement. So that increases the learner motivation and engagement. So by that way, we can increase the participation of the learners in the discussion forum. And now there are tools that are coming up for implementing the LXI in an online course. We can also use
tools. Like you have a discussion forum in an online book. Along with that, we can also implement these tools in an online course, that is Google Forum, the forum which is in Moodle, Discord, Discourse. So all these are the technologies which can be used for implementing the Alexa in an online course. So what is the Discourses? It is an open source internet forum. So the features there, it includes threading, categorizing, tagging of discussions, and real-time modifications. So we can use this in the LMS also. And Discourse, Padlet is actually a very useful resource where you can even share it in the classroom, and you can also share it in the online course where you can collect the experience of the learners. LODIC, it is connecting the students and which is used for discussions. The Piazza, it is a question answer platform for blended learning. And Kialo, it is a free tool which is used for classroom discussion, which increases the critical thinking process of the learners. And along with that, there are platforms which are available for the common public also, like online question answers communities, which has got Quora and MSDN, that is Microsoft Developer Network. And you have a news aggregation site, that is all the news are being aggregated in one site, that is the Reddit. And Medium, it is used for sharing your knowledge and wisdom. So you can write your own stories in this. There are around 100 millions of people in this Medium. And you also have message boards, which is a virtual space where people can post messages and have conversations. And you have gaming forums where people who are interested in games, they can participate in these forums. These are all available for public use, and these are which can be used for educational purposes. So these tools can be added in the LMS, and you can use it for having a peer connect among the learners. So here is an example of the Padlet. You can see here an interesting Padlet which focused more on the educational use of the Padlet. How a Padlet is a tool which can be used in the classroom as well as in an online course to get the answers from all the people in one single space. So the educational ways to use Padlet. Now the question is how the Padlet can be used for educational purpose. So people have commented on, they have said that use a Padlet wall for students to create various thinking maps digitally. So they can use the Padlet for creating the thinking maps, for collaboration with colleagues, for flow maps, content curation, setting up of stations, for embedding videos or website. So in a single link of a Padlet, you can have multiple viewpoints. So from that, the teacher or the instructor will also come to know where the students are standing and what more to be done in order to achieve the objectives. Right? So you will have an idea about what they have written. So based on that, the next class we will focus on where they are lacking and how we have to move about. So this will give you an idea of it. So we can use Padlet. Actually, it is free only for up to 3 papers we can use it, but otherwise we have to go for paid promotions. And there is a research paper also which describes how Padlet was used for collaborative learning in a master's degree course. And in the designing learner-centric MOOCs for an interactive session, they have used Padlet. In 2019, this was used, the Padlet was used as in the interactive session.
as a discussion forum. This has been used. So you have different threads. These are set as the threads. That is post staff announcement, queries on orchestration, on assessment and move, queries on LXI. So like that you have different threads, and where you have a plus symbol. So by plus symbol you can add what you wanted to write. So you just write, you can have your link, you can have your videos, image, so all these things upload. So some you can write and you can publish it. So like that you can use your Padlet for, when you can share the Padlet, you have a link, you can share it and you can collect the answers from the participants. Right, so you can use this for classroom discussion also. And you have what is called as the Google Forums. So the Google Forums, you have Google Groups where you can share your discussion points. It is very simple, easy to use. And there is a document which has been created on navigating the Google Forum in a Swayam course. So how to navigate the Google Forums in a Swayam course. So that has been created. And it has been posted on the discussion forum, how to navigate the Google groups. So that way it has been created and it has been posted in the group. How to create a Google forum, how to join the forum, how to post a topic on the forum. So all these things, it has been created and posted by using a Google Forums. You can also try out all these technologies, and you can create an enriching experience among the participants, right? So the summary of LXI creation steps. How do you create an LXI? So choose a topic. The more important point here is you decide a topic which allows for multiple viewpoints. If there is no multiple viewpoints in the topic that you are choosing, there will not be much interaction and there will not be much participation and discussion which are taking place. So always see to that you have multiple viewpoints and you allow the learners to draw upon their experience. So give some time for them to act upon their viewpoints, so to share their experiences. And you choose a topic, that is your first step, and write down the focus question. So you anchor a focal point for discussion. So you choose a question such that it is of valuable for the discussion and it should elicit multiple diverse viewpoints. And you provide a detailed instructions like how to write the answers and reading and commenting on others' posts. And finally, you create the reflection quiz. So you can write 1 or 2 questions such that the answers required. They have to read the responses in the discussion forum. So if they are not going to read up, simply if they are going to answer, then there is no, then they will not get the correct answer. They may not get the correct answer, right? And you reflect on the responses. So we have to go back, see the discussion forum, and then reflect on the responses and express about what they learned from the others' post. So they read, reflect, and express. That is taking place in the reflection quiz. And finally, incentivize the participants. So these are the 3 steps. Choose a topic, write the focus question, and create the reflection quiz. So what is the takeaway in LXI is you can leverage peer learning through focus question, which is the most important point in LXI. So without this focus question, we may not be able to have an interaction. So anchor discussions around the focus question.
So you have to monitor the group for that, and you see to that the discussions are not coming to an end. You provoke certain questions or probe certain questions so that it still becomes more expanding, and close the loop with the reflection quiz. So finally you close it with the reflection quiz. So that will be the takeaway of today's session. So foster interaction. What's the magic that happens? Usually there are people, diverse people who are visual learners, who are kinesthetic learners, who wants to hear from someone and learn. So there are diverse group of learners for which this discussion forum will be really of an enriching experience. And I would say that it will not happen all of a sudden. Like, no, in order to ensure a high level of effectiveness, so the competence and the pedagogical understanding the teacher must invest. So it is all, it lies in the hands of a teacher, right? So she has to bring up a LXI that is of effective for the learners. So that requires a commitment and adequate training also. Hope that was clear to you. Thank you all for your patient listening. LXI constructor. If you want the link of LXI constructor, 1 second. For the submission of assignment, it doesn't take much of your time. Hopefully, it will take around 15 to 20 minutes. So, hope you can submit it by tomorrow. I will stop sharing. Okay, thank you, madam. Thank you. 1 second. I will share the LXI instructor, constructor link. I have shared the LXI constructor. It is available in the IIT Bombay website, right? You can go download that and you can construct your LXI and use it for the discussion which are taking place in an online course. Now the forum is open for discussion. Hope you have got the concept of LXI.
So you can submit your assignment by tomorrow. If you have any questions, you're welcome. The whole LCM model, no, it is very useful, right? After having learned that, now I'm applying the LCM model in the classroom. So this is not applicable only for the online courses or for the MOOC courses. We can even use that in the classroom also. The LED can be used in the classroom, or we can LBD can also be used, LXI and LX3, all those components can be used for the classroom purpose also. So day-to-day classroom teaching, we can apply these concepts. The LXI constructor is all about the focus question, instructions for the participants, and finally the reflection quiz. Roll number 62. You choose a topic from the course and then you create a focus question that has multiple viewpoints, then generate the discussion, give instructions for the participants, and finally you steer up the discussion and end up with the reflection quiz. For any topic, you can use it. I think you have asked for communication skill can be used LXI constructor. So if I am right, then the communication skill can also be used for LXI constructor. We can generate an enriching discussion on the topic of communication skill. Okay, thank you all. If there are no more questions, then I think we can wind up. Submission can be done by tomorrow. Thank you all for your patience. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Roll number 13 submitted the Google form. Okay, thank you. When we take up the discussion in the classroom, no, there are only few people who will be actively taking part in the discussion. The front benchers, especially. So, in order to have an active discussion, right, we can use the technology because nowadays the students are more with the technology use. So, just we will make use of that technology in order to enhance their discussion by use of technology. Okay, then.
Thank you, sir. Santosh Gangli. So shall I leave or shall you want me to wait? The organizers? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, yes, sir. Shall I leave? Yes, ma'am. Yeah, thank you so much, sir. Thank you all.
Hi, good evening, everyone. Yes. Good evening, sir. Good evening. So, shall I start? Yes, sir. All right. So, hello and namaste to everyone. Hope you all are doing fine. And you know that this session is a little different from the LCM framework, but we'll see what can be done through AI. So, as you know, my name is Krishna Roy. I'm an assistant professor at Symbiosis School of Economics, and primarily I teach economics. But my keen interest is in technology integration, AI in education, and related topics. Okay, so I think we have covered many aspects of learner-centric approaches or concepts. So let me just share my screen and then we'll start the formal presentation. Just let me know if you're able to see my screen. Yes, sir. Your screen visible. Okay, all right. So today's topic is AI in education, creating e-content. So, and I would like to thank the university, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, for giving me the opportunity to share my knowledge and expertise. In last 4 or 5 days, I'm sure you have learned so many concepts in the learner-centric framework. So now, one question I would like to ask. What is the most important technique, strategy, or concept or idea that you have learned in last 4, 5 days? So you can use the chat box and type. जो भी आपके मन में एकदम से आ रहा है कि I know this. I mean, kind of a new knowledge, new strategy, or new technique. So I'll pause for a minute and then I'll go through the responses. I repeat the question, maybe in Hindi, कि आपने 4-5 दिन में क्या नया सीखा in terms of learner-centric MOOC model or learner-centric. तो वो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप चैट बॉक्स पे लिखिए. So, Yes. we have learned all the 4 quadrants, and we were very happy to do the assignments also, learning by doing. All right. वो लिखिए मैम, जो भी आपको लगता है कि this is a interesting learning for me. कोई भी एक particular strategy और particular concept और particular idea, तो उसको आप चैट में लिख दीजिए. Of course आपने बहुत कुछ सीखा है. जो आपके मन में सबसे पहले आ रहा है आप उसको लिखिए. तो अभी तक मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जनों ने अभी तक लिखा है और ये आई एम श्योर 45 का ग्रुप होगा एट द मोमेंट. 45 से भी ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली 50. यहाँ पे नंबर 52 शो कर रहा है. तो मुझे पता है ये शाम का समय है, थोड़ा चाय पीने का टाइम हो गया है और लास्ट सेशन है इस दिन का, बट आई वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. I'll wait for 30 more seconds. Again, I'll repeat the question. आपने लास्ट 4-5 दिन में वो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्या सीखा है? कोई एक नाम लिख सकते हैं, या तो थियरी या स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी, whatever comes to your mind first, आप उसको लिखिए. Good. I'll wait for 15 more seconds. Hello. Yes. Sir.
The reflection spot concept. It was a new concept for us, which we learned and was found interesting Good, and good, useful. good. Okay. Thanks for sharing. Okay. So my next question, my follow-up question, आपके स्क्रीन में ये रहा. Go through the replies. जितने भी आपने अभी replies देखे हैं ना, go through all the replies. अभी मेरे सेशन के replies. And then सबसे highest number किसको, which strategy or idea have the highest count, वो count करके लिखिए. So the follow-up question is, जो भी आप लोगों ने लिखा है उसमें से highest count किसका है? LED है, LBD है, reflection spot है. Reflection spot. Okay, okay, all right. सर रोल नंबर 37 ये आपने 9 क्या लिखा है सर? आपने काउंट लिखा है क्या? 9 responses है इसलिए लिखा है सर. अच्छा, ठीक है, ठीक. All right, absolutely fine. So could you please elaborate what is 3 and 4 confused? What do you mean by 3 and 4 confused? Sir, Yes. yes, sir. Good evening, sir. Third Good and evening. fourth, sir, first quadrant that is LED and second is LBD. I get the complete knowledge, sir, but about LXI and LXT, third and fourth, LXT and LXI. I'm a little bit confused ki if we are given the quiz, we are given the MCQs, we are given the focus question like in a mathematics, like a word problem or whatever asking the question on MCQ based. We put it, but in Alexa and LXT again we are I just got the information about you put the same questions again. Then what is the difference between these 3 quadrants? अच्छा, so मैम एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है? Yes, yes. I'm sure Yes. अगर आपको डाउट हुआ रहेगा तो there might be a chances that many more have this doubt, ठीक है? तो मेरा Yes, नेक्स्ट स्लाइड ही है, अगर मैंने वो एंटिसिपेट किया था. कैन यू see my next slide? एक सेकेंड, दिस इज माय स्लाइड. तो अभी मैम आप क्या कीजिए ना, अनम्यूट करके ही रखिए. आई विल टॉक टू यू, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एंड अदर्स कैन लिसन. ठीक है मैम? रोल नंबर 14 मैम, व्हाट्स योर नेम मैम? सती, SATI. हाँ, सती मैम. तो पहला एलईडी मैम, एलईडी थोड़ा आप बता दीजिए क्या आपने समझा, और मैं उसमें ऐड करता हूँ इफ एनीथिंग इज मिसिंग. Okay, sir. LED, that means how to write the dialogue script. हाँ, but what exactly is LED? Exactly, that means script writing. If I'm as a teacher. No, script writing is just a process in LED. क्या और कोई बता सकता है what is LED all about? मैंने आपको नोट करवाया था आपके नोटबुक. Learning by doing. It's a Learning by video. doing. It's a Not video. learning by doing, not learning by doing. It's a you can give videos. You can give the reflection spots related to your content. हाँ, तो सबसे पहले again you can make a note of this. LED, when we are talking about LED, first thing is that we are talking about video. Now, what is that video? That video should be interactive video, है ना? That video should be interactive. अभी वो video interactive कैसे होगा? जब आप उसमें reflection spot डालेंगे. ठीक है? ये this should be very clear. Now, what ma'am is stating, script writing. अभी आप एक video बनाएंगे तो उसके लिए आपको script लिखना पड़ेगा, है ना? उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि मैं स्टार्टिंग में क्या बोलूं, हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन बोलूं, या फिर नमस्कार बोलूं, गुड मॉर्निंग बोलूं. गणेश सर ने बोला होगा आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, गुड इवनिंग नहीं बोलना चाहिए, या तो हेलो बोलिए या नमस्ते टू एवरीवन, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये मूक कोर्स है. यू कैन वॉच द वीडियो एनी पॉइंट इन टाइम. तो एलईडी जब हम बोलते हैं, एलईडी इज वीडियो नंबर 1, एंड वीडियो शुड हैव अ रिफ्लेक्शन स्पॉट. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. इज दैट क्लियर? सती मैम आप बोलिए, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एलबीडी. एलबीडी कोई एक्सप्लेन करेगा? एनीबॉडी?
who can explain LBD in a nice 2-3 sentence में LBD मुझे Can I, sir? Can I? yes please Yes. ma'am. Sir, LBD, that means learning by doing. That Yes. means whatever your script, you're writing your script, and you can add there some questions like MCQs, like reflection spots. But that is, you have to give, there is a customized or conventional or constructive feedback. यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे आपका कंफ्यूजन आ गया मैम. Yeah. अभी what you said, जो क्वेश्चन आप स्क्रिप्ट में डालेंगे, that is reflection question, that is not LBD. हाँ. तो आप जब रिफ्लेक्शन स्पॉट डालते हैं, रिफ्लेक्शन स्पॉट मींस पुटिंग ए क्वेश्चन. तो ये Yes, वाला sir. जो हमारा हो गया, यहां से ये LBD अलग. LBD इज एन एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट. दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता लगा. पहले वाले में LED में आप एक कोई पॉज पॉइंट डालेंगे जिसमें कि आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं छोटे मोटे, वो माइक्रो प्रैक्टिस के लिए. बट LBD इज लाइक ग्रेडेड एक्टिविटी असेसमेंट. तो आप इसको स्क्रिप्ट से ना जोड़ें, आप इसको रैदर क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे ये जो LBD हम डिजाइन करेंगे, दैट शुड बी बेस्ड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आई विल डिजाइन LBD. तो ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, पहला पॉइंट. Okay, yes, sir. ठीक है I ना? got it. तो Yeah. हाँ, वो इसीलिए आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है हर एक में आई एम डूइंग असेसमेंट. तो डिफरेंस क्या है? तो ये जो है LBD जो है क्वाड्रेंट 2 है. आफ्टर वॉचिंग द इंटरैक्टिव वीडियो, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू डिजाइन, व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट्स यू डिजाइन, जिस द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज फीडबैक, कस्टमाइज एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ठीक है? तो ये हो गया हमारा LBD. उसके बाद तीसरा क्या आता है? कैन एनीवन टेल मी तीसरा? आपके नोटबुक में होगा, देखिए, व्हाट इज LXT ऑल अबाउट? रिसोर्सेस. रिसोर्स. इसका कीवर्ड ही है रिसोर्स. तो अब जब रिसोर्स देंगे, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, हाउ मेनी रिसोर्स आई गिव. आप मान लीजिए आपने एक क्या बोलते हैं LED बनाया, वीडियो बनाया एक टॉपिक के ऊपर. ठीक है? तो सती मैम कोई एक टॉपिक बोलिए, तो आई कैन गिव एन एग्जांपल एंड देन इट विल बी इजी. Yeah, sir. कोई एक घंटे का टॉपिक बोलिए. Yes. Direct and indirect proportion ठीक है? in डायरेक्ट mathematics. एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे मैंने सबसे पहले एक इंटरैक्टिव वीडियो बनाया जिसमें रिफ्लेक्शन स्पॉट डाल दिया. फाइन. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे फिर मैंने एक लंबा अच्छा खासा MCQ बनाया, जिसको कि मैंने अच्छे तरह से ऐसे फीडबैक दिया बच्चों को कि अगर राइट आंसर हो तो क्या होगा, गलत आंसर हो तो क्या होगा, समथिंग लाइक दैट. अभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर कैन बी लर्नर्स जो कि अलग अलग लैंग्वेज से होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस से होंगे, जेंडर होंगे. तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शन जो भी आपने बोला है, उसमें क्या करेंगे, विल फाइंड रिसोर्सेस अलग अलग, और बहुत ही सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, स्ट्रेटेजिकली हम रिसोर्स फाइंड आउट करेंगे. तो रिसोर्स हमने फाइंड आउट किया. मान लीजिए आपने इसके 4 रिसोर्स फाइंड आउट किए. पहला, आपने एक YouTube वीडियो दिया. दूसरा, आपने एक वेब लिंक दिया. तीसरा, आपने एक टेक्स्ट बुक दिया. और चौथा, आपने कुछ अपने नोट्स दे दिए. ठीक है? 4 दिए. क्यों 4 दिए? आप बोलोगे कि मतलब cater to all kinds of learners, slow learners, fast learners, diverse learn, अलग तरीके के आपने 4 रिसोर्स दिए. Now the question is, आपने तो रिसोर्स दिया है to address diverse learners. क्या learners उसको जाके एक्सेस करेंगे? शायद करेंगे, शायद नहीं करेंगे. तो जब ये सवाल आता है शायद करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे, उन्हीं रिसोर्स में से थोड़े बहुत क्विज तैयार कर दोगे, लो ग्रेडेड क्विज तैयार करोगे, ताकि यू आर इंसेंटिवाइज द लर्नर टू गो एंड एक्सेस दोज रिसोर्सेस. ये ग्रेडेड होगा, लो ग्रेडेड होगा. ठीक है? तो ये हो गया रिसोर्स. जो लास्ट वाला आया, लास्ट में आएगा लर्नर एक्सपीरियंस इंटरैक्शन. ये डिस्कशन फोरम, ये आपको पता होगा. सो बेसिकली डिस्कशन फोरम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट हाउ पेयर्स आर इंटरैक्टिंग इन एन ऑनलाइन फ्रेमवर्क. जब पेयर्स इंटरैक्ट करते हैं, पेयर टू इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर टू पेयर, तो इसको हम बोलते हैं डिस्कशन फोरम. इस डिस्कशन फोरम को अगर आपको सिस्टमैटिकली ड्राइव करना है, देन व्हाट शुड बी देयर? कैन एनीवन टेल मी? इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वेल क्राफ्टेड फोकस क्वेश्चन सर.
एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है फोकस। आप एक कुछ ऐसा फोकस वेल क्राफ्टेड मींस एक अच्छा ओपन एंडेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस दोगे जो कि आपके डिस्कशन को ड्राइव करेगा इसी टॉपिक में, जो मैम आपने भी टॉपिक बोला उसी टॉपिक। अच्छा, उसका और एक कंपोनेंट क्या है अपार्ट फ्रॉम फोकस क्वेश्चन? रिफ्लेक्शन क्विज। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि ये रिफ्लेक्शन क्विज क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन स्पॉट क्या बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्विज का मतलब है आपके वॉट एवर डिस्कशंस आर हैपनिंग इन डिस्कशन फोरम, वहां में से आपने किसी आप मैं अभी लिखूंगा, आप मान लीजिए सती मैम ने कुछ एक दिन लिख दिया तो आई विल से अकॉर्डिंग टू सती मैम व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो ये एक रिफ्लेक्शन क्विज हो गया। तो डू नॉट मिक्स विथ रिफ्लेक्शन क्विज एंड रिफ्लेक्शन स्पॉट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन क्विज हो गया जो कि बेस्ड ऑन डिस्कशन फोरम इनपुट्स या फिर डिस्कशंस। मेकिंग सेंस? क्लियर टू ऑल? अभी कोई भी सवाल है तो पूछिए। सती मैम क्लियर हो रहा है या फिर और कोई आपको अगर डाउट है तो यू कैन प्लीज अनम्यूट एंड यू कैन टेल मी, आई विल बी हैप्पी टू। सर रिफ्लेक्शन क्विज फिर से एक बार रिपीट प्लीज। रिफ्लेक्शन क्विज का यहाँ पे मतलब ये है मैम, इमेजिन कीजिए यू आर इन अ मूक फ्रेमवर्क, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन डिस्कशन हैपनिंग एट डिस्कशन फोरम, है ना, उसमें से बहुत सारे। तो उन उन जो ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रहे हैं पीयर टू पीयर, वहां में से मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन क्विज। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यस सर। इसका रिफ्लेक्शन स्पॉट से कोई लेना देना है, ये डिराइव होता है, ये जनरेट होता है आपके पीयर इंटरेक्शन से, ठीक है। आई एम श्योर आज आपने देखा होगा LXT और अभी इससे पहले वाले सेशन में आपने देखा होगा किस तरह से डिस्कशन फोरम से क्वेश्चन उठा के बनाया जाता है रिफ्लेक्शन क्विज, है ना। तो ये चारों का अलग अलग डिफरेंस है। अभी अगर ये बेसिकली लर्नर सेंट्रिक मूक मॉडल है, देन अभी आप खुद सोचिए इसमें ऐसे यस Yes. Just please can you tell me what is difference in assimilation and reflection quiz? What is? Assimilation quiz and reflection quiz. ठीक है, तो एसिमुलेशन क्विज क्या होगा मैम? यू गिव रिसोर्सेज, हम बच्चों को पढ़ाई के लिए रिसोर्स देते हैं, वेब लिंक दिया, ये दिया, फिर रिसर्च पेपर दिया, बुक रेफरेंस दिया। व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ क्विज फ्रॉम द रिसोर्सेज व्हिच यू हैव गिवन, दैट क्विज इज कॉल्ड एज एसिमुलेशन क्विज, जो कि लो वेटेज क्विज होगा। मतलब वो ग्रेडेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट टिपिकली हम ग्रेडेड करते हैं इसको, बट उसका ग्रेडेड का जो वेट रहता है वो कम रहता है, but it comes out from the resources, it is generated from the resources। और जो रिफ्लेक्शन क्विज है फोर्थ क्वाड्रेंट में, रिफ्लेक्शन क्विज it generates from the interactions, discussion forum interaction। क्लियर हुआ मैम? Yes, yes, thank you. No problem। That means that at every level, that is LED, LBD, LXTI or LXI, we some way or other way we are assessing learner Absolutely, absolutely, वो तो important aspect है। with हाँ, the आप ये reflection बोलोगे spot, reflection yes, quiz, assimilation yes, quiz, and yes, feedback forums। yes, we are assessing। Without assessment, you will not be able to figure out the learner is doing anything or not। So assessment is the medium to understand, to know। अभी मान लीजिए हमारे यहाँ पे कितने हैं, 52 है। अभी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा और बोलूंगा कि इस पोल का आंसर कीजिए, तो 52 में से जितने रेस्पॉन्ड करेंगे मुझे पता लग जाएगा कि कौन कौन एक्टिव है ना। मान लीजिए इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कितने जन मुझे एक्चुअली में पीपल आर लिसनिंग टू, तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी? आई हैव टू डू सम असेसमेंट, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब भी आई कैन क्रिएट अ पोल इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई कैन गिव डू दिस पोलिंग। तो मान लीजिए अगर 50 में से 30 जन सुन रहे हैं, वो 30 जन रेस्पॉन्ड करेंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि एटलीस्ट 30 पीपल आर लिसनिंग टू मी। तो असेसमेंट इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। नाउ अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट LED ऐसा कोई असेसमेंट नहीं है, इट इज लाइक माइक्रो प्रैक्टिस, एक रिफ्लेक्शन स्पॉट कुछ आपने दे दिया। अच्छा, LBD इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे कि आपका पूरा पूरा असेसमेंट छुपा हुआ है। LXT में
एसिमुलेशन क्विज में बहुत लो वेटेज आप करोगे, रिफ्लेक्शन क्विज में भी बहुत लो वेटेज, मतलब उतना ज्यादा वेट नहीं दोगे. बट यस, इन ऑल द क्वाड्रेंट्स you are absolutely right, there is some strategy for assessment. Any other question? Chaliye. So I'm hoping that by now you have some clarity about what is learner-centric MOOC model. And some of these principles are actually very interesting. अगर आप इसको और elaborate way में सीखना चाहते हैं, I'm sure first day Samir sir also told you that the course is starting from today. So you can go to SWAYAM platform and register for LCM course. So I'm also stating that you will get in and out of everything. It's a 8-week course, fantastic course. It can definitely, I can tell you, it can change some of your thoughts, some of the strategies, the way you think, especially if you are thinking in terms of online. It also helps in physical or face-to-face mode teaching learning ecosystem. Okay? Okay, so moving on from here, today's topic is AI. Okay? So what is AI? या फिर learner centric framework में हम AI कहाँ पे ला सकते हैं? Or using AI in education, how can we create some content? That can be fascinating. That can be interesting question for all of you, right? हम AI को use करके क्या हम कुछ content generate कर सकते हैं? या फिर उसका integration mindfully, systematically हम कैसे करें? ठीक है? So let us now deep dive into the topic of AI. What is AI? सबसे पहला, I'll also tell you, I mean, that's worked with me very well. How do you learn any topic? For me, what works, पहले मैं वो बोलता हूँ, then I'll come to AI. आप मुझे बताइए, मेरे लिए अगर कोई भी टॉपिक आता है, सबसे पहला is what is that topic? So पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है what, कि ये है क्या, सब्जेक्ट मैटर है क्या. उसके बाद क्या आता है? Any guess? उसके बाद मेरे लिए जो काम करता है, that works, why should I learn this topic? अगर वहां पे why should I learn that topic convince होता हूं मैं, then I move on to the third, that how should I learn the topic. So तीन, you can just remember this: what, why, how. That works very well अगर आप इसको कोई भी topic, when you start acquiring new knowledge or new strategy or new skills, what, why and how framework में जाएंगे तो it is so interesting. All right, now what is artificial intelligence? So according to MIT, so MIT defined as the quest to build machines that can reason, learn and act intelligently. ठीक है? So artificial intelligence क्या है? ऐसा मशीन है जो कि रीजन कर सकता है, सीख सकता है और अकॉर्डिंगली और इंटेलिजेंटली एक्ट कर सकता है. अभी आपने देखा ही होगा, दिस डेफिनेशन वेरी वेल सूट्स विद जो अभी चैट जीपीटी, जेनेटिव एआई वगैरह जो आए हैं, डेफिनेटली ये काम करता है. ठीक है? सो नाउ very basics, I'll not go deep into this dynamics of AI, but बहुत quickly मैं आपको बताता हूँ. It is like a Venn diagram की तरफ से अगर आप समझोगे, so artificial intelligence एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है. और उस इकोसिस्टम को आप कैसे डिफाइन करते हो? उसमें it involves techniques that equip computers to emulate human behavior, enable them to learn, make decisions, recognize patterns, solve complex problems, etc. उसका थोड़ा refined होता है machine learning, because it use now lot of algorithm. उसके नीचे आता है डीप लर्निंग. यू यूज बिग डेटा, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स, न्यूरल नेटवर्क्स, फिर उसको आप अच्छे तरह से एनालाइज करते हो और फिर उससे समझते हो कि कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है या फिर कैसे कोई सिस्टम काम करता है. उसका रिफाइंड वर्जन होता है जेनरेटिव एआई. उसका भी रिफाइंड होता है जेनरेटिव एआई. नाउ दिस जेनरेटिव एआई आप सबको पता है क्या है. एग्जांपल जेनरेटिव एआई का, लाइक जेमिनाई, चैट जीपीटी, मेटा एआई, बिंग, ये सारे जो हैं जेनरेटिव एआई के पार्ट हैं. सो जेनरेटिव एआई क्या करता है?
ह्यूमन लाइक लिख सकता है टेक्स्ट, प्रोग्रामिंग कर सकता है, इमेज बना सकता है, गाना गा सकता है, मेनी थिंग्स. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ आप मुझे ये बताइए, आप एआई को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कौन कौन से काम पे आपके डेली अगर देखा जाए तो आई एम श्योर यू विल फाइंड आप एआई को ऑफिस में यूज कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं टीचिंग में, असेसमेंट में, रिसर्च में, या फिर कोई और पर्सनल टास्क यूज कर सकते हैं. आई एम श्योर आप करते भी होंगे अलग अलग तरीके से. दैट विल डिस्कवर, विल ऑल्सो डिस्कस मोर. ऑल्दो ये एआई का जो टॉपिक है, इट टेक्स एक्चुअली अ फुल डे सेशन, बट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट 1 आवर, आई थिंक नेक्स्ट वी हैव वन मोर आवर, नेक्स्ट 1 आवर में मैं जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. रादर देन एक्सप्लेनिंग, आई थिंक मैं क्या करूंगा, मैं आप मुझे जो बताएंगे मैं दिखाऊं. सो लेट्स डू दैट. बट हाँ, बिफोर दैट लेट्स क्विकली गो थ्रू द थियरी. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है एआई का? बहुत जगह हो सकता है. पर्सनलाइज लर्निंग हो सकता है, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड असेसमेंट एंड फीडबैक. ऑटोमेटेड असेसमेंट एंड फीडबैक अभी भी स्लोली स्लोली इंडिया में आ रहा है. इट इज कमिंग. सो आई विल टेल यू अ स्टोरी. मैं अभी लास्ट मंथ अबू धाबी गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में टू प्रेजेंट माय पेपर. तो वहां पे देयर वाज अनदर रिसर्चर who also presented her paper, and what they have started doing, अभी बच्चों के आंसर स्क्रिप्ट होते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, पिक्चर लिए बच्चों के आंसर स्क्रिप्ट को और एआई को बोला, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, उनको बोला कि आप इसको एसेस करो बेस्ड ऑन अ वेरी सिस्टमैटिक रूब्रिक. और उसका जो फाइंडिंग्स था वो उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने आए. सो दे सेड, दे क्लेम दैट 90% वाज मैचिंग विद द ह्यूमन इवैल्यूएशन. तो उन्होंने क्या किया, कुछ एआई को दिया और सेम स्क्रिप्ट एक्सपर्ट को भी दिया, टीचर को भी दिया, और बोला कि आप एसेस कीजिए. एंड देयर वाज 90% मैच ऑफ देयर बोथ द स्कोर्स. सो दे व्हाट दे वर स्टेटिंग कि हमारा जब और 95% अचीव कर लेंगे देन विल इंप्लीमेंट दिस. सो ये आ रहा है धीरे धीरे, इट विल कम. You will see in due course of time that automated assessments will slowly come in some form or the other. Of course, learning analytics is also very important, क्योंकि उसमें आप if you are using Moodle like platform, तो वहां पे आपको you'll get to know कि मेरा अगर मैंने एक वीडियो अपलोड किया उसको कब किसने देखा, कितना देर देखा, तो सारा उसका एनालिटिक्स पता लग जाता है. बेसिकली स्टूडेंट एंगेजमेंट पता लग जाता है. ऑलराइट, बेनिफिट्स क्या है? यही सारे बेनिफिट्स हैं. डेटा ड्रिवन इनसाइट मिलेगा आपको, रियल टाइम फीडबैक मिलेगा, पर्सनलाइज लर्निंग, जो स्लो लर्नर्स है उसके लिए अलग लर्निंग पाथ, जो एडवांस है उसके लिए अलग लर्निंग पाथ, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं रहेगा. सो बहुत कुछ इसके फायदे हैं. चैलेंजेस क्या क्या है, थोड़ा चैलेंजेस को हम क्विकली डिस्कस करते हैं. सबसे पहला चैलेंज आता है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स यू नीड टू रजिस्टर. ये डेटा प्राइवेसी का बहुत, एंड यू आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद सम प्लेटफॉर्म, सम टूल, तो आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, है ना. सो दैट नीड्स टू बी, आई मीन, वेरी केयरफुल वेदर whichever platform you are registering or sharing your information, whether that is authentic, whether that is good or not, you never know. Data privacy is a big concern. Another problem is algorithmic bias. Algorithmic bias होता क्या? Can anyone tell me what is algorithm? यहाँ पे computer science के भी teachers हैं. What is algorithmic bias when we think in terms of AI? I hope आप लोग सब सो नहीं गए. You're still awake. Yes, And sir. I No, am sir. hoping No, sir. that- Yes. What is algorithmic bias? Can you explain with an example? आप कुछ भी, I mean, you can share your views, not an issue. अगर वो थोड़ा गलत भी है तो it's okay. But can someone try unmute and state? मेरे ख्याल से एक chat में कुछ है. I'll just check. Hello, sir. Yes. Sir, bias is a constant which we use हाँ. to get So the in linear data. हाँ. It is a constant which we add in the weights to get the means correct data or answer output, you हाँ. can say. तो अभी AI in education पे algorithmic bias क्या हो सकता है, मैम?
you can change the steps somewhat in the algorithm. अच्छा, so maybe I'll try to simplify. Yeah, so होता क्या है, all these platforms they worked in certain kind of algorithm. कुछ तो लिखा रहता, आप ये दोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा. तो LLM models based on algorithms. Now उस algorithm को मान लीजिए, for example, मैं आपको एक छोटा सा example देता हूँ, you'll understand. अभी अगर मान लीजिए मैंने कोई प्लेटफॉर्म है, AI प्लेटफॉर्म है, और मैंने बोला टॉप 10 इंडियन न्यूज दे दो मुझे, और वो टॉप 10 इंडियन न्यूज खाली टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे दे रहा है, इट इज काइंड ऑफ ए बायस. वो एक पेपर का ही क्यों देख रहा है? मैंने तो उसको न्यूज मांगा था, वो इंग्लिश में ही क्यों दे रहा है, वो हिंदी में क्यों नहीं दे रहा है, मराठी में क्यों नहीं दे रहा है? तो सम काइंड ऑफ बायस रहता ही है यहाँ पे, और वो बायस कितना सीवियर है वो देखने वाली बात है. ठीक है, सो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये एक चैलेंज. अनदर पॉइंट इज टीचर. अभी एआई वगैरह आ जाएंगे तो आपको अभी तो पता लग रहा है कि दिस पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू इज कृष्णकांत एंड ही इज अ ह्यूमन, बट क्या गारंटी आफ्टर 5 years ये दिस पर्सन विल बी एक्चुअल ह्यूमन और इट विल बी एआई, है ना? इसीलिए टीचर्स का रोल क्या होगा आगे, वी आर नॉट श्योर. अनदर इज एक्सेस एंड इक्विटी. अब बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है, लैपटॉप ही नहीं है, मशीन ही नहीं है. So at the moment, roughly speaking, around 50% of the Indian schools don't have computers with internet. उनका क्या? उनको क्या करेंगे हम? उनके पास तो है ही नहीं, वो क्या एआई का करेंगे? एक लॉट के पास है जो आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है, एक लॉट के पास तो है ही नहीं. So these are challenges. These are major challenges when we think about AI in education. Correct. Any question, ma'am? Agar if you disagree or if you want to share, you can definitely say कि हाँ, I agree or disagree, whatever you can say. Agree, sir, 100%. All right, ma'am. चलिए, moving on. ये this is future of AI. Future of AI में होता क्या है कि आगे होने वाला क्या है. अच्छा, मैं ये स्लाइड नहीं दिखाता हूँ, आप मुझे कुछ बोल सकते हैं अनम्यूट करके. व्हाट कैन बी द फ्यूचर जब AI आ जाएगा एजुकेशन में, क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाला है? आप अनम्यूट करके शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? If the answer sheets are automatically changed, हाँ. check, most of the students will fail, sir. लेकिन मैम आप रुब्रिक उसको थोड़ा लूज बनाइए ना. You're right. अगर देखिए, आपने जैसा रुब्रिक दिया वो वैसा चेक करेगा. आपने अगर बोला कि मेरे किसी स्टूडेंट को 100 में से 30 से नीचे नहीं दोगे तो वो नहीं देगा, वो एआई है मैम, है ना? आप अगर ये बोलोगे कि मेरे स्टूडेंट्स को आप इतना लिखने से इतना मार्क्स दोगे तो वैसा होगा. बट यू आर राइट, अगर मैंने बहुत अच्छे तरह से रूब्रिक बना के दे दिया, इट इज सो डिफिकल्ट, सो मेनी फेलियर्स कैन कम. यस, डेफिनेटली दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. बहुत अच्छा बोला मैम आपने. और कोई बोलिए. Sir, may I? हाँ, Hello? बोलिए मैम, प्लीज. Sir, there can be the challenges like data privacy, or you can say that ये फ्यूचर में आने वाला है. फ्यूचर में दिस इज अ प्रॉब्लम, दैट डेटा प्राइवेसी फ्यूचर में इसका एक होने वाला है. वो तो हमने चर्चा की है. और कोई एजुकेशन में और क्या हो सकता है, सोचिए. Sir, teacher displacement. हाँ मैम, Teacher displacement can be there, or डेंजरस है. यस, व्हाट यू आर स्टेटिंग. तो क्या लगता है आपको, 10-12 साल में ऐसे एआई टीचर्स आ जाएंगे? मुझे तो लगता है मैम, आई डेफिनेटली थिंक कि ये लोग कुछ ना कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स जो होंगे, दे विल ब्रिंग. हमारे पास अभी भी वो एलेक्सा वगैरह रहता है ना कुछ, तो वैसा टाइप का कोई मशीन ला के टीचर की जगह रख देंगे और बोलेंगे बच्चों को आस्क एनीथिंग, ही और शी विल आंसर. पता नहीं. I mean, May I sorry to interrupt, but such AI-based teacher cannot replace human teacher because we need human interaction or हम यहाँ intervention. पे रिप्लेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं इट विल कम. But at many situations we need human intervention or interaction also. बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है. So that will be very rigid with AI-based. Absolutely. Now we are saying, we are trying to speculate कि क्या हो सकता है. हम ये स्टेटमेंट नहीं मान के चल रहे हैं कि कंप्लीट रिप्लेस करें. हम ये बोल के चल रहे हैं कि एआई, कुछ एआई बेस्ड टीचर्स आ सकते हैं. दैट इज आवर प्रोपोजिशन, है ना? और भी, और आपको क्या लगता है और क्या हो सकता है? Hello, sir. Sir, main problem can be there.
that there will be the lack of personal touch between the teacher and the students. हाँ, वो तो मैम एक है इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, मतलब जब तक आप उसकी आंखों में देखोगे नहीं, आप उससे स्माइल करके बात नहीं करोगे. यस, अग्री. आई थिंक रोल नंबर 33 वांट्स टू से समथिंग. यस सर. That particular points, because we lost the humanity also. Yes. Because we cannot be connecting for that just like a touch students or बिल्कुल. teacher behavior. Those are problems, sir. Those are definitely are major problem. जो कि Because Tesla company owners have already stated that हाँ, in future AI is very dangerous. absolutely. बिल्कुल अग्री सर. अभी तक तो वो रीजन करने लगे. You know what, sir? I'll also share my views. अभी तक हमें लगा नहीं था कि AI will be able to do reasoning thing. Logical reasoning नहीं कर पाएगा. But due to the emergence of large LLM models, वो तो reasoning कर रहा है. वो तो बोल रहा है ये अच्छा ये खराब है, बहुत कुछ बोल रहा है. तो अभी रीजनिंग के बाद अभी क्या चल रहा है सर? अभी ऐसे चल रहा है कि वो उसको कॉन्शियसनेस नहीं होगा, उसको कॉन्शियसनेस नहीं आएगा. तो वो अभी चल रहा है. बट इट इज वेरी डेंजरस. अगर वो रीजन करने लग गया, मान लीजिए एआई कैन ऑलवेज से कि ये इंसान अच्छे नहीं है, हमें इनका सिस्टम नहीं चाहिए. दैट कैन बी वेरी डेंजरस. यस, कंप्लीटली अग्री. और कोई कुछ एनी अदर इनपुट्स, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया. हाँ, बोलिए मैम. Sir, now me and my husband are in 40s. मगर हाँ. मेरा हस्बैंड जब स्कूल में था तो हाँ. सर वो मुझे अभी बताता है कि मुझे हर टाइम ऐसे लगता था कि न्यूज़पेपर अगर हम लोग ऐसे पढ़ते तो न्यूज़पेपर ऐसे कुछ छोटा सा कुछ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा और उस पे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सो हाँ. दैट विल बी बेटर. एंड देन मोबाइल्स वगैरह ये सब अभी आ हाँ. गया. नो, वी नो बिल्कुल. दैट कि वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन मोबाइल. सो बिल्कुल. व्हाट आई ऑलवेज थिंक कि जब मैं बुक्स देखती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं रहता है बुक्स पढ़ने का, तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे कुछ चीप वगैरह आ जाए कि जो मैं इंसर्ट करूंगी मेरे दिमाग में, एंड देन आई रीड होल बुक. सो आई डोंट मैम, नो दिस थिंग्स विल हैपन. मैम एलोन मस्क ये ट्राई कर रहा है. Just tell you that. वो माय कुछ तो गॉड. ऐसा सोच रहा है कि चिप डालेगा कुछ तो. एंड दैट्स क्या? सो, आई मीन, मुझे तो वो सुन के आई ही नो. आई थॉट ऐसा कैसे हो सकता है. वो चिप डालेगा बोल रहा है, दिमाग को रीड कर लेगा बोले. दिस इज क्रेजी, एक्चुअली क्रेजी. एंड आई वांट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर लिसनिंग, आप खुद सोचिए कि आगे क्या हो सकता है, हम क्या देखेंगे. क्योंकि 20-25 साल पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास ऐसे कोई मोबाइल फोन होगा, है ना. हमने सोचा ही नहीं था 25 साल पहले. अभी मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद हम ये इंटरनेट क्या होता था हमें पता नहीं, वो आ गया. वो आते आते चलो कंप्यूटर लैपटॉप तो पहले से आया, उसके बाद धीरे धीरे ये एआई आ गया है. आई मीन आगे क्या होने वाला है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू माइंडफुली थिंक कि क्या हो सकता है, और आप इसको लेके सोचिए क्या सही है क्या गलत है. वो हम थोड़े देर धीरे धीरे आगे देखेंगे. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज अ गुड डिस्कशन दैट फ्यूचर में क्या हो सकता है. हमने बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ लिए हैं, और जो आप लोगों में से बोल नहीं पाया है वो जब प्रेजेंटेशन होगा तो कल हमारे कोई आएंगे तो उसमें बोल दीजिएगा, या फिर यू कैन राइट इन द चैट विंडो ऑल्सो. ऑलराइट. सो नाउ अभी 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 जो हमने डिस्कस किया, व्हाट चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स डू टीचर फेस विद द राइज ऑफ एआई. अभी अगर आप खाली टीचर, आप यू एज अ टीचर अगर आप सोचोगे तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द चैलेंजेस एआई के आने के वजह से, क्या क्या चैलेंजेस या इश्यूज होने लगे हैं. तो मैं ये अभी बोलूंगा. हमारे एक पार्टिसिपेंट्स ने, एक टीचर ने अभी बताया कि असेसमेंट का एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो सबको फेल कर देगा. अच्छा, और आप सोचिए क्या होगा, और थोड़े बहुत इनपुट्स. प्राइवेसी कंसर्न. हाँ, प्राइवेसी हो सकता है, क्योंकि हाँ अभी आप अपने कुछ क्वेश्चन पेपर्स उधर डाल दोगे, कुछ कर दोगे. बिल्कुल, ये एक हो सकता है. यस, अग्री, पॉइंट टेकन. और क्या हो सकता है सोचिए. और सर आपने अभी बताया कि एल्गोरिथम बाइस अपने आप भी उल्टे सीधे नतीजे सिस्टम जनरेट कर सकता है. बिल्कुल, अगर उसका उसका एल्गोरिथम अच्छे से नहीं लिखा गया है, सारे ह्यूमैनिटी को, सबको मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिव गुड ये सोच के अगर नहीं बनाया गया, इट कैन बी डेंजरस. यस. और सोचिए पर्टिकुलरली आपके आपके डे टू डे का सोचिए कि मेरे एआई आने की वजह से मेरे को क्या दिक्कतें हो रही है.
what सर kind of अभी problems? स्टूडेंट्स क्लास में आते नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं, हाँ तो आई डोंट थिंक व्हेन दिस विल हैपन, नो देयर विल बी नो स्टूडेंट इन द क्लास एंड ओनली वन टीचर विल बी देयर इन क्लास। हाँ, वो उनको लगेगा कि चैट जीपीटी है, सब कुछ यही पढ़ा हाँ, देगा हमें। एवरीथिंग इज, हाँ, सब हो रहा है उनसे। पहले तो हमें गूगल से ही डर लगता था कि गूगल है तो उनको सब पता लग जाता है। अभी अगर चैट जीपीटी ह्यूमन लाइक टीचर ही है उसके पास, सो दैट कैन बी डेंजरस, दैट कैन बी एब्सोल्युटली डेंजरस। यस, वेरी गुड पॉइंट। और सर, ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी हमारी थिंकिंग पावर को बहुत ज्यादा बेकार भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिखाऊंगा, अभी नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखाऊंगा। बट यस, वेरी वैलिड पॉइंट। आप अगर टेक्नोलॉजी को बहुत सोच समझ के यूज नहीं कर रहे हैं तो इट कैन एक्चुअली बैकफायर। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। चलिए, मूविंग ऑन, यहां से आगे बढ़ते हैं। और ये जो सर ने अभी बताया, टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को मतलब बहुत ये कर सकता है। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड अ फ्रेमवर्क। तो मैं कल शाम को सोच रहा था कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नाउ इमेजिन, आप मेरे साथ इमेजिन कीजिए, एक मैं इंसान हूं, आई एम ए ह्यूमन, और एक मेरे पास एक एआई है, एक टेक्नोलॉजी। एआई इज लाइक ए टेक्नोलॉजी। सो टू एंटिटीज, वन इज ह्यूमन एंड वन इज टेक्नोलॉजी। अभी अगर पहला केस ये ऑप्शन आता है कि मान लीजिए मैं एज ए ह्यूमन, एज ए टीचर, मैं अपना दिमाग नहीं लड़ा रहा हूं, मैं खाली एआई से ही करवा रहा हूं सब कुछ। इमेजिन अ सिनेरियो, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, आप लोगों को कई बार देखा होगा, आपके बहुत सारे जो सोशल मीडिया में पोस्ट हैं, जो ईमेल रिप्लाईज हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, उसमें इंसान दिमाग नहीं लड़ा रहा है, वो एआई को ही बोल रहा है कर देने को, और वो पढ़ भी नहीं रहा है। ऐसे में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट पुअर होगा। जैसे कि सर ने अभी बताया, कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं होगा, कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं होगा, है ना। यू अग्री सर? आपने देखा, आपने यही वाला अभी बताया मुझे, देखिए उसी का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। तो उसका कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं होगा, उसका लर्निंग नहीं होगा, उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स वीक हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो और सर एक चीज, सॉरी सर, मैं वो कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट में बी जनरेटेड। बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्युटली, दैट्स अ फैसिनेटिंग टर्म एक्चुअली, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। मैंने अभी सुना नहीं, मैं आई विल मेक अ नोट, गिव मी जस्ट 10 seconds, आई विल मेक अ नोट ऑफ दिस। वेरी फैसिनेटिंग टर्म सर। हो सकता है इंटेलेक्चुअली मैं मतलब कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो बोलेगा तुम बोल रहे हो। देयर कैन बी मेनी थिंग्स एक्चुअली। यस, यू कंप्लीटली एग्री। इसका दूसरा लेयर क्या हो सकता है, देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि वो अभी के तौर पे वो इंसान अपने ही इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है और सब काम कर रहा है, जैसे हम पहले करते थे, 2 3 4 साल पहले करते थे, तो वो कर रहा है, विच इज स्टिल गुड। क्योंकि अगर आप टीचर बोल रहे हो, यू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस, यू हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो इसमें ये पहले वाले केस से बेटर है। एटलीस्ट उसका एफिशिएंसी रहेगा, मे बी थोड़ा कम हो सकता है, या फिर मैं बोल रहा हूं कि व्हेन द ह्यूमन एफिशिएंसी इज एवरेज, ऑफ कोर्स ये वैरी कर सकता है, बट ऑन ए लार्जर स्केल मैं बोल रहा हूँ, ब्रॉडर स्केल में, जब ह्यूमन एफिशिएंसी एवरेज हो, बट वो एआई यूज नहीं कर रहा है, स्टिल दैट इज गुड। प्रोडक्टिविटी रहेगा, एफिशिएंसी रहेगा, मे बी मॉडरेट रहेगा, दैट्स ओके। अच्छा, तीसरा वाला सिनेरियो क्या होगा, एक एवरेज इंसान, वो अपना काम ठीक से कर रहा है और उसको एआई का भी सपोर्ट मिल गया है, और उसको पता है माइंडफुली कि एआई को किस तरह से इंटीग्रेट करना है एफिशिएंट। उसके लिए क्या हो जाएगा, दैट्स अ बेस्ट सिनेरियो। आजकल के दौर पे दैट्स द बेस्ट सिनेरियो। वो मल्टीटास्क कर पाएगा। वो जो ऐसे ऐसे टास्क हैं, उनको थोड़ा वो जिसमें कि ज्यादा आपका इंटेलेक्ट लगता नहीं है, जो कि थोड़ा मैकेनिकल काम है, तो उसको वो क्या कर देगा, वो एआई से करवाएगा, है ना, वो एआई से करवाएगा। तो उसको ज्यादा टाइम, आई मीन द टीचर विल गेट मोर टाइम टू डू क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ इट्स टीचिंग एंड लर्निंग। वो फिर सोचेगा कि मेरे क्लास में इस बच्चे के लिए मैं क्या एग्जाम्पल डिजाइन करूं, या इस ग्रुप के लिए मैं क्या सोचूं, या कौन सा स्टोरी बोलूं उनको कल लेक्चर में जाके, सो दैट दे कैन कनेक्ट द कोर्सेज। हमें ये सब, हम बर्न आउट हो जाते हैं, वी हैव सो मेनी लेक्चर्स, और हम सोच ही नहीं पाते, हम बुक लेके सीधा जाते हैं कई बार, बस ये है, हाँ ऐसे ऐसे पढ़ लो, विच इज नॉट इफेक्टिव। तो अगर मेरे कुछ काम में एआई ने मुझे हेल्प कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, या फिर कुछ जो काम में उतना ज्यादा दिमाग लड़ता नहीं है, जो थोड़ा प्रोसीड्यूरल है, जो करने के लिए करते हैं हम, अगर वो काम एआई ने देख लिया,
बाकी के टीचिंग लर्निंग में आई कैन मेक माई टीचिंग वेरी फैंटास्टिक, आई कैन स्पेंड मोर टाइम टू डिजाइन माई लेक्चर, है ना। तो मेरा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा, एंड दैट कैन गिव अ गुड रिजल्ट। इट्स अ स्मॉल फ्रेमवर्क एक्चुअली। यू कैन गिव मी योर कमेंट्स, आप इससे अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं। अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो अनम्यूट एंड स्टेट कि नहीं ये फ्रेमवर्क ठीक नहीं लगे, या फिर एक काम कीजिए, चैट विंडो पे वाई या एन लिखिए। अगर आपको लगता है दिस फ्रेमवर्क मेक सेंस, पुट वाई। इफ यू थिंक नो दिस फ्रेमवर्क इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, पुट एन। या फिर अनम्यूट करके भी आप इसको क्रिटिकली बोल सकते हैं, ये कल का बनाया हुआ मॉडल है, कल रात को मैंने बैठ के बनाया इस मॉडल नहीं है, इट्स लाइक अ फ्रेमवर्क, वेरी सिंपल फ्रेमवर्क दैट हाउ वी कैन थिंक ह्यूमन एआई इंटरेक्शन से क्या हो सकता है। ओके, आई एम थैंकफुल, अभी तक वही आ रहा है। कोई इसका क्रिटिक भी दे सकते हैं, आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म। यू कैन ऑलवेज से कि नहीं दिस पॉइंट आई डोंट अग्री, बट ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो यहां तक तो था डायलॉग्स एंड इंटरेक्शन। अब कोई इसके आगे कोई डायलॉग और इंटरेक्शन नहीं है। आई मोस्टली यू अग्री टू दिस। अभी क्या होगा, सम यूजफुल टूल्स, ठीक है। हम अभी डिस्कस करेंगे सम यूजफुल टूल्स। तो मैं बिफोर आई जंप इनटू टूल्स एंड आई शो, एक टीचर, आप एक सोचिए, यू ऑल आर टीचर्स, हायर एजुकेशन टीचर्स और प्रोफेसर, वी कॉल आवरसेल्व्स प्रोफेसर्स। कितने तरह के टास्क करता है? एक टीचिंग करता है, टीचिंग के अलावा और क्या क्या करता है? कैन एनीवन टेल मी? Motivate the students to learn and give them also emotional support if they want. Psychological support also teacher can give to the student. That is part of teaching मैम। मैं इसको टीचिंग का ही पार्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोर्स पढ़ाते पढ़ाते भी आई गिव माई सपोर्ट एंड आई मोटिवेट। यस, अग्री। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सर ने बात किया, और मेरे ख्याल से सर किसी डिपार्टमेंट में हैं जिसमें कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता होगा। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। हमारा नैक का काम रहता है, हमारा अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनका काम रहता है, राइट? यू ऑल अग्री विथ मी, मेजॉरिटी ऑफ यू डू सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो एक टीचिंग हो गया। यस सर, ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नाउ कॉमर्स एसोसिएशन इवेंट्स हैव स्टार्टेड, सो दैट एक्टिविटी आल्सो वी हैव टू ऑर्गेनाइज। तो कहीं ना कहीं मैम ये इवेंट्स एंड ये भी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। एक्सटेंशन एक्टिविटीज, हाँ, एक्सटेंशन एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, तो ये हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट what you think, what else a teacher does? the setting of question papers and evaluation of question papers. ठीक है, that's actually a part of teaching learning, but ठीक है, agree। तो एक टीचिंग हो गया, एक असेसमेंट हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं इवेंट को डाल रहा हूँ, और कुछ कर सकता है एक टीचर? सोचिए और सोचिए। Sir, we are appointed as external senior supervisors or at times internal senior supervisors for examinations. मैम वो भी एडमिन हो गया। अच्छा अच्छा, दैट इज आल्सो एडमिन। और कोई सोचिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, counselors and mentors. यस, Counselors and mentors. टीचिंग के अलावा भी यू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, बुक लिखते हैं। यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें कैश के लिए यूजीसी के लिस्टेड पेपर्स लिखने होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो कहाँ गया? आपके करियर में अगर आप पेपर नहीं लिखोगे तो ग्रोथ तो देंगे नहीं ये लोग। यस ये सर, तो यूजीसी में लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट इफ यू वांट टू, आई थिंक 7 रिसर्च पेपर्स। अगर 7 चाहिए, असिस्टेंट से एसोसिएट, अलग अलग लेयर्स हैं इसके। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आप इसको मोटे मोटे तौर पे देखोगे, एक कंप्लीट डायरेक्ट टीचिंग हो गया, एक असेसमेंट हो गया, एक पार्ट ये हो गया आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और एक रिसर्च कर रहे हैं, है ना, मोटे मोटे तौर पर। ऑफ कोर्स इसका थोड़ा लेयर अलग भी निकाल सकते हैं। अब मुझे सबसे पहले बताइए, सबसे पहला हम लेते हैं टीचिंग। तो टीचिंग में आप क्या क्या करते हैं, मैं इसको दिखाता हूं आपको। अगर आप टीचिंग में मेरा स्लाइड देखेंगे, तो टीचिंग में इधर यू जनरेट टेक्स्ट और यू जनरेट इमेज सिमुलेशंस, कुछ अलग अलग डायग्राम्स, या फिर आप वीडियो बना रहे हो। So, अगर हम मूक के फ्रेमवर्क में देखें या फिर फिजिकल फ्रेमवर्क में भी देखें, एक टीचर ये करता है, उसको ये चाहिए रहे, या तो वो टेक्स्ट मींस वो लेक्चर नोट्स बनाएगा, वो पीपीटी बनाएगा, ये सब टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। उसके अलावा क्या हो सकता है, वो पीपीटी में कुछ इमेज डालेगा,
कुछ टेबल्स बनाएगा, फिगर्स बनाएगा, ये हो सकता है। उसके बाद वो वीडियो बना सकता है ना। तो अभी मैं आपको बाकी के स्लाइड्स में नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं आपको बोलूंगा आप मुझे बताइए आपको क्या देखना है एआई में। आप खुद सोचिए कि यू आर ए टीचर, यू टीच, you assess means you do evaluation, you do administration and you do research। अब पूरा पूरी ओपन है, क्योंकि ये मेरा सेशन जो होता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये एक दिन का सेशन होता है। तो एक दिन का अभी हमारे पास शायद 40-45 मिनट्स बचे हैं, 40 मिनट्स बचे हैं सर अभी जो बेस्ट है कुछ। आज एडवांस में एआई में क्या है टीचिंग से रिलेटेड वो आप बता दीजिए बस। अच्छा, वो क्योंकि मोटा मोटी तो हमको पता है, मतलब एआई से रिलेटेड चैट जीपीटी है, चैट जेमिनी है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जो भी टूल्स वगैरह जो हमने देखे अभी तक वो तो है, लेकिन जो एडवांस में है जो हम लोगों को नहीं पता होगा ऐसा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं नोट करके रखता हूँ। ये सर आपका नाम बताइए। सर चरण सिंह। चरण सिंह सर ने बोला एडवांस टूल्स दिखाओ। मैं दिखाता हूँ सर, और भी बताइए क्या क्या है। मुझे कुछ एक काम कीजिए ना सर, आप चैट विंडो पे डाल दीजिए, मैं कुछ कुछ जो आते रहेंगे मैं आई शो यू क्विकली, है ना। सो मैंने चरण सिंह सर का तो लिख दिया कि एडवांस टूल्स जो भी है वो दिखा दीजिए। बाकी आप लोगों को क्या देखना है वो चैट विंडो पे डाल दीजिए, मैं वहां से पिक कर करके जो सबके लिए जरूरत होगा मैं वो पिक कर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो बेसिकली इट इज लाइक ए डिमांड बेस। मैं चैट में आई ओपन द चैट। आपको क्या देखना है एआई से रिलेटेड, जो मतलब आपको लगे कि मेरे लिए ये काम आएगा। ये बहुत जनरल, हाउ टू यूज एआई टूल्स इज वेरी जनरल। कोई स्पेसिफिक बोलिए कि in आप ऐसे बोल improving सकते the हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं मुझे पीपीटी बनाना सिखाओ, मुझे लेक्चर नोट बनाना सिखाओ, मुझे इफेक्टिवली असेसमेंट के पेपर्स बनाना सिखाओ, ऐसे कुछ निटिग्रिटीज पे बोल। ठीक है, शॉर्ट एनिमेशन वीडियोस। सर एक्चुअली ना ये सब काम हम लोग पहले भी करते थे और हैप्पीली करते थे, टीचिंग, इवैल्यूएशन। मगर सर अभी नैक की वजह से क्या हो गया है कि ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू डॉक्यूमेंट। ओके, सो सजेस्ट समथिंग देयर, मतलब सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन एकदम फटाक से हो जाए, ऐसे कुछ रहेगा तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है। सो मैं ये लिखता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ये मेरे तरफ से नहीं हो रहा है, ये किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से हो रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो एडमिन है, आपने किसी को राइट्स दिया होगा जो शायद वो लिख रहे होंगे या गलती से लिख रहे होंगे, तो इसको आप अगर हो सके तो प्लीज बिफोर आई शो देम द टूल्स, तो इसको आप हटा दीजिए। ये मैं नहीं हटा पा रहा हूं क्योंकि ये शायद मे बी गलती से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन पे लिख रहे होंगे और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके ओके सर। मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको रिफ्रेश करने के लिए। sir is it is a misuse of technology। हाँ, एब्सोल्युटली। ये देखिए ना, ये कंट्रोल मेरे पास भी नहीं है, ये कंट्रोल मेरे पास नहीं है, बट ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वी दिस इज व्हाट हैपेंस, टेक्नोलॉजी में आपका बहुत जगह पे कंट्रोल नहीं रहता। तो मैं कोशिश करता हूँ न्यू टैप करने के लिए। देखिए ये मेरे स्क्रीन में है, आप लोगों को भी मेरे स्क्रीन में ये दिख रहा है क्या लाइन? यस सर। yes sir। व्हाट आई डू, आप लोग थोड़ा सोचिए आप मुझसे क्या देखना सर चाहते हैं। स्क्रीन शेयर इसको बंद करके फिर से एक हाँ, बार चालू आई करेंगे, डू दैट, आई डू क्योंकि दैट। व्हाइट बोर्ड एब्सोल्युटली, बंद कर दिया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं कर रहा हूँ। आप लोग तब तक सोचिए और क्या देखना चाहते हैं, आई विल शो दैट। मेरे ख्याल से अभी गया है स्क्रीन शेयरिंग, आई विल अगेन शेयर। ठीक है, स्टार्ट विद द टूल्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द टूल्स। सबसे पहले मैं आपको, सर ने बोला एडवांस कुछ दिखाओ, मैं आपको कुछ एडवांस दिखाता हूं। पहले आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिए आपको मेरे अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे आप खाली मुझे ये बोला कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, है ना।
आपको वॉइस सुनाई दे रहा है कि नहीं, आपको ये कंफर्म करना है. तो लेट मी स्टार्ट. लेट मी शो यू सम एडवांस थिंग. हाय, आर यू देयर? Yes, sir. यस सर, यस सर. आपको नहीं बोला है. आई एम आस्किंग एआई. हाय एआई, आर यू देयर? Hi there. I'm doing well, thank you. How are you today? I'm good. I'm good. I'm pretty good. I'm actually taking a session on AI in education. That's great. AI in education is such an exciting topic. What specific aspects are you focusing on in your session? Just give me a minute. अच्छा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, I can hear you clearly. Yes, sir. Please go ahead with your question or point. All right. So can you please tell me some of the important techniques that I really want to teach well to my students? I want to become a very good teacher. So can you tell me 3-4 points so that I can teach well? Absolutely. Here are a few key techniques. First, focus on making your lessons engaging and interactive. Second, personalize your teaching to address different learning styles. Third, provide constructive feedback to help students improve. Finally, keep up with the latest education. You're welcome. If you have any more questions or need further guidance, feel free to ask. All the best. Yeah. Now the thing is that many of the audience speaks Hindi. क्या आप मुझे हिंदी में बोलेंगे? ये आप मुझे 2 पॉइंट बता सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अच्छा पढ़ाने के लिए? जरूर, हिंदी में बताती हूँ. पहला, अपनी कक्षा को रोचक और अंतरक्रियात्मक बनाने पर ध्यान दें. दूसरा, छात्रों की विभिन्न सीखने की शैलियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करें. वेट, यहाँ पे मैंने अभी देखा कि कुछ मराठी स्पीकिंग लोग हैं. क्या आप मुझे पहला पॉइंट थोड़ा डिटेल में मराठी में बोलेंगे? नक्कीच. आपल्या वर्गाला रोचक आणि परस्पर संवादी बनवणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारून त्यांच्या विचारांची देवाणघेवाण करा, ज्यामुळे त्यांचा सहभाग वाढेल. अच्छा, बहुत अच्छा. क्या आप बंगाली भी बोलते हैं? Got it. If you'd like, I can also provide some points in Bengali. Would that be helpful? हाँ, बोलून. আপনি কেমন আছেন? You're welcome. If you need any more help, feel free to ask. Can you say something in Bengali? শুভেচ্ছা জানাচ্ছি. আর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাবেন. Okay, now tell me something. Can you tell me an important... Have a great day. Goodbye. Okay. So now, can you tell me, in chapter 13 of Bhagavad Gita, Lord Krishna said 20 practices which one should do. Can you tell me at least 5? Sure. In chapter 13 of the Bhagavad Gita, Lord Krishna discusses various qualities. Here are 5 of them: humility, nonviolence, patience, simplicity, and self-control. Can you elaborate a little further? Of course. Humility means being free from pride and arrogance. Nonviolence emphasizes not causing harm to any living being. Patience involves enduring difficulties without complaint. Simplicity refers to living a straightforward and honest life. Finally, self-control is about managing one's desires and impulses. This is so good. You have explained such a nice way. Thank you so much. You're very welcome. I'm glad you found it helpful. Take care. This Sara conversation, I hope you are able to see on my screen. So on a scale, can you rate how was the conversation? On a scale of 10, let's say human and AI interaction. आपने अभी 10 मिनट में देखा मैंने क्या किया. It is advanced. ये थोड़ा एडवांस है. आपने शायद YouTube में देखा होगा या कई जनों ने ट्राई भी किया होगा. I'm sure. तो अभी आप can you rate how was the conversation on a scale of 10? 8 sir. 8. This is crazy actually. अगर आप देखोगे this is crazy. तो AI के पास इतना नॉलेज, वो भगवत गीता का
Actually, at this point in time, I'm learning chapter number 13. I'm reading chapter number 13. So that's why I was curious to know all those practices. And वो बोल रहा है, clearly बोल रहा है. So you can imagine that what kind of, if you want to make use of AI in a better way, the world is like yours. You can do so much of good things. You can actually learn so many things from AI, and language is not a barrier. अच्छा, आप में से बहुत जन मराठी स्पीकर्स भी हैं, क्या बोलेंगे वो सही बोल रहा था मराठी में? हाँ सही बोल रहा था, लेकिन कहीं तो उसमें थोड़ा ग्रामर हाँ फिर से एक बार क्वेश्चन पूछूं क्या सर? आप मुझे एक क्वेश्चन देंगे, मैं उसको पूछता हूँ. नहीं नहीं, मराठी का ग्रामर सही था, लेकिन जैसे लगता है ना कि नया एसेंट कोई। एसेंट सर, हाँ accent, एसेंट right. मराठीचा जो एसेंट असतो तो नव्हता त्याच्यामध्ये. हाँ, so ma'am, what is happening? These are large LLM models. वो धीरे धीरे it's learning. It's actually learning slowly, and it will maybe in years time or maybe 2-3 years में उसका एक्शन भी आ जाएगा, उसके ग्रामर्स भी ठीक हो जाएंगे, वो मतलब वो एक्ट करने लगेगा. तो so this is one of the advanced feature. अच्छा, और एक advanced feature मैं आपको दिखाता हूँ. चलिए मैं दूसरा स्टार्ट करता हूँ, दूसरा एक थ्रेड लेता हूँ. आप मेरे, आई एम श्योर यू आर एबल टू सी मैं क्या उसको बोल रहा हूँ करने के लिए. So I've written create an image of future Pune city. देख रहे हैं, ये फ्यूचर पुणे सिटी बना रहा है वो. ऐसा होने में 50 साल लगेंगे, और बट एटलीस्ट उसके इमेजिनेशन में देयर इज समथिंग दैट इज देयर. तो आप उससे बहुत कुछ, क्योंकि मैं आई एम नॉट गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक लेक्चर नोट एंड ऑल दैट. वो तो आप आराम से कर लो, वो तो आपने किया भी होगा लेक्चर नोट. तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर इज कि आपको ये देखना है कि जब आप लेक्चर नोट बनाते हो, डू नॉट टेक एज इट इज. आपने उसको अच्छे खासे डिटेल प्रॉम्प्ट दिया, सबसे पहला डिटेल प्रॉम्प्ट. उसके बाद आपने उस कंटेंट को एनालाइज किया, पढ़ा, फिर आप बैठ के उसको पूरा एडिट करो. देन योर कॉग्निटिव, जो हम बोल रहे हैं कॉग्निटिव लेवल, देन इट विल बी इंटैक्ट. अदरवाइज अगर आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, देन इट इज डेंजरस. It's very, very dangerous. You'll be addictive towards doing that, and that's not doing any good to you and your future growth. ठीक है. अच्छा, मैं चार्ट में देखता हूँ और क्या क्या इनपुट्स थे. मे बी, अच्छा, प्लीज टेल द डिफरेंस इन चैट जीपीटी. सर ये अलग अलग, मे बी यू कैन कॉल इट अलग अलग, दे ऑल आर बेस्ड ऑन LLM मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बट इनके अलग अलग ऑनर है. जैसे कि चैट जीपीटी है ओपन एआई का है सर, जेमिनाई गूगल का है, और मेटा फेसबुक का है. मेटा तो मेटा का ही है एक्चुअली, फेसबुक का आप ऐसे जान सकते हैं. ठीक है सर, तो ये डिफरेंस है, बट ये काम मोर और लेस सेम ही करते हैं. इनके इनपुट्स में थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, वो आप टेस्ट कीजिए और देखिए इनपुट्स में क्या डिफरेंस है, और किस में ज्यादा एल्गोरिथमिक बाइस है, कम है, या फिर चैट जीपीटी अलग अलग बेस्ट चीजों है पर सर, मैंने लगभग सारे यूज किए. चैट जीपीटी बिल्कुल. बेस्ट है. एट द मोमेंट इट इज नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो सर. बट कुछ कुछ जगह पे मिलता है, जब आप थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड चीजें कर रहे हैं एंड ऑल दैट, उसमें थोड़ा अलग हो जाता है. अलग अलग है इसके. व्हेन यू गेट इनटू इट आपको पता रिसर्च लगता है. ओरिएंटेड कर रहे हैं तो जिमिनी बेस्ट है. हाँ, तो अभी देखिए, मैंने कभी एनिमेटेड वीडियो बनाया नहीं है, बट अगर आप लोगों को किसी को एनिमेटेड वीडियो का टूल्स पता है तो आप बोल सकते हैं. आई कैन टेल यू सम ऑफ द टूल्स, उसको यूज करके आप शूट कर सकते हैं. मैं आपके सामने 1 मिनट में अभी वीडियो शूट करके बता दूंगा. बट एनिमेटेड वीडियो शूट्स के लिए ज्यादातर वो पेड वाले हैं, तो मुझे कोई ऐसे ओपन सोर्स फ्री ऐसे दिखा नहीं है अभी तक. बट अगर आपको किसी को पता है तो चैट में डाल दीजिए, शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस विच इज फ्री, विच इज लाइक ओपन सोर्स, वो आप डाल सकते हैं. अच्छा, और कोई आ रहा है? एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू शो? आपको दिखेगा इसमें सारा इंटीग्रेटेड आ गया है, कैनवा भी इसमें आ गया है, चैट जीपीटी में सब कुछ आ जाए, रिज्यूम बिल्डर है, बहुत कुछ. इफ आई जस्ट ओपन एक्सप्लोर जीपीटीज, मैं आपको दिखा देता हूँ, and then you will realize so many things are there, so many things. So if I just scroll down,
पाइथन का कोड लिख सकता है, वो कैनवा से पीपीटी, सर क्या डेली आपने से। इसका सब्सक्रिप्शन लिया है क्या? यस यस यस। हम्म। ट्रेनिंग पर्पस के लिए आई जस्ट हैव टू शो द डिफरेंस। क्या होता है सर, अगर आप इसका फ्री वर्जन लेते हैं वो लिमिटेड देता है आपको क्वेरीज। तो अभी मैं, अगर आप मुझे पूछेंगे तो इसको क्या करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फ्री वर्जन में ही चलाइए, डोंट गो गेट इनटू द पेड वर्जन। लेकिन अगर आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, देन यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ योर यूनिवर्सिटी, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज को बोलिए कि वो एक लाइब्रेरी में एक डिवाइस में सब्सक्रिप्शन लेके आते हैं, सो दैट एवरीवन कैन यूज। दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमें ये लगता नहीं, फॉर मी ट्रेनिंग पर्पस के लिए मुझे लगता है, इसीलिए मैंने लिया। ठीक है, ऑलराइट। सो दीज आर मेनी टूल्स दैट यू कैन यूज। तो आप इसमें, आई थिंक आपको महेश सिंधे सर ने दिखाया होगा दैट हाउ टू जनरेट एमसीक्यूज, है ना। तो आपने एक लेक्चर नोट बनाया, एमसीक्यू जनरेट किया, उसमें से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी ले लिया, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। ऑलराइट, तो ये सारा इसमें पावर है। तो हमारे पीपीटी में आते हैं, तो ये एक हिस्सा हो गया टीचिंग का। टीचिंग के अलावा और क्या हो सकता है, अभी एक बड़ा मुद्दा क्या लिखा था हमने, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा एडमिन को लेके है। तो मैं एडमिन का कुछ आपको दिखाता हूं, ठीक है, मैं एडमिन का कुछ आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला एडमिन का काम दिखाता हूं। तो इज इट पॉसिबल, आप में से जितने जन भी अगर थोड़ा बहुत कैमरा ऑन कर सके, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू स्विच ऑन द कैमरा? तो मैं एक काम करूंगा, वो आपको दिखाऊंगा कैसे एडमिन में इट इज यूजफुल। सो आप अगर इफ यू कैन शेयर, थोड़ा बहुत कैमरा ऑन कर सके तो ठीक है। सो देख लीजिए, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, और ये लिया मैंने स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं, मान लीजिए दैट राइट 100 words about the picture। कई बार हमारे कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कि हमें पिक्चर के बारे में कुछ ना कुछ लिखना रहता है, तो वो ये इस तरह के काम वो आराम से कर सकता है। ये देखिए, ये देखिए, कुछ ना कुछ वो लिखेगा। अभी तो उसके पास इंफॉर्मेशन कम है, बट व्हेन आई गो एंड टेक फिजिकल, यू कैन से दैट फिजिकल मोड में रहता है, वो पूरा बता देता है कि पीपीटी में ये स्लाइड चल रहा है, देयर इज एन इंस्ट्रक्टर, वो ये बोल रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो सर एक आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, वेट। तो मैंने उसको ये दिया और मैंने लिखा, अभी आप, आई एम श्योर यू आर एबल टू सी, राइट 100 वर्ड्स अबाउट द पिक्चर। उसने ये पैराग्राफ लिख के दिया। अभी उसको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट, ऑनलाइन सिनेरियो में तो कॉन्टेक्स्ट ज्यादा पता नहीं, बट इफ इट इज अ फिजिकल काइंड ऑफ सेटअप, तो वो पूरा आपको क्लियरली बता देता है क्या करना है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको एचआरडीसी कुछ कहाँ से दिखाऊं। पता चला उसे? हाँ सर, उसमें एचआरडीसी भी लिखा है, एचआरडीसी बामू। सर उसने कहीं तो देखा होगा ना, ये फुल स्क्रीन में, ये फुल स्क्रीन जब आपने डाला ना, तो यहाँ पे किसी के उसमें BAMU था, हाँ राइट। तो वहां से देखा इसने। ठीक है सर, तो तो ये एक टास्क हो गया। अभी मैं आपको और एक एडमिन टास्क दिखाता हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, कैन यू सी दिस थिंग? आप मेरे कर्सर को देखिए। यस यस। Yes, yes. सो दिस इज एन एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड एज हारपा, HRPA। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस हारपा से आई जस्ट प्ले विद इट, यू लाइक इट एक्चुअली। आज मेरे को एक मेल आया होगा एक स्टूडेंट का, और उसको मैं एक्चुअली उतने अच्छे से जानता नहीं हूँ, और वो मेल मुझे सुबह कभी तो आया था। ये आप मेरे ईमेल को देख पा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट है, और वो बोल रहा है कि उसने BBA किया है, और वो मेरे अंडर में कुछ रिसर्च वगैरह कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो उसने अपना रिज्यूमे अटैच किया है, और ये करना चाहिए। ऑल्दो आई नीड टू बी वेरी माइंडफुल रिप्लाइंग टू दिस, बट लर्निंग पर्पस के लिए आई एम जस्ट शोइंग। मैंने इस ईमेल को कॉपी किया। मान लीजिए हमारे यहाँ पे अगर कोई बहुत बिजी है और उनको थोड़ा थोड़ा ऑटोमेट करना है, तो वो ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। हारपा में जाएंगे, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए मैंने ये प्रैक्टिस किया था आपके इससे, इसको बोलूंगा,
तो उसमें रुकिए, आई विल गो एंड आई गो टू, मैं ऑटोमेट करूंगा इसको। अच्छा, अभी इसमें क्या रहता है, इसमें मुझे खाली ऑप्शन बताना पड़ता है, रिप्लाई रिप्लाई टू ईमेल। देख रहे हैं आप, रिप्लाई टू ईमेल, रिप्लाई टू ईमेल किया मैंने। रिप्लाई टू ईमेल करने के बाद मैंने ईमेल को कॉपी पेस्ट किया और मैंने लिख दिया। अभी नाउ सी व्हाट हैपेंस। Thank you for reaching out and sharing your background and aspirations. It's great to hear about your interest in health administration and social sector contribution. I appreciate your willingness to assist the project. I will review your resume and keep you in the mind for any relevant opportunity or collaborations in future. अब मैं इसको लेके आराम से I can just modify, quickly edit कि हाँ मेरे को हाँ बोलना है या मेरे को as it is छोड़ना है। At least वो एक basic reply कर देता है फटाफट। Are you able to see? तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें there are many things, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी एक पैराग्राफ को शॉर्ट करना है, किसी एक पैराग्राफ को सिंप्लीफाई करना है, कहीं सिग्नेचर ऐड करना है, so many things administrative task can be done. आप लिख के रखिए, at the moment you just write the name harpa, इसका नाम है HARPA। मैं इसको बंद करता हूँ, फिर से I'll show you। ये देखिए HARPA, ये एक, जब आप इसका एक्सटेंशन रन करोगे तो वो ऐसे आ जाता है, ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस। और इसको आप क्लोज कर सकते हो ऐसे, और ये साइड में रहता है। फाइन, तो ये आप एक अच्छा टूल यूज कर सकते हो हारपा। कई सारा आप एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे आप मान लो कोई इवेंट कर रहे हो, कुछ पोस्टर क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हो दे कैन यूज कैनवा एंड दे कैन मेक स्मॉल। अच्छा, आपने एनिमेटेड वीडियो पूछा था, कैनवा कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एनिमेटेड वीडियोस। बट हाँ, उसके भी कुछ फ्री और पेड तक है। आप फ्री में इतने सेकंड्स तक देगा वो। ये तो हो गया रिप्लाई। अगर Yes. हमें कोई मेल बनाना है ऐसे, मतलब बिना कुछ ऐसा, इसका रिप्लाई तो उसने दे दिया इसको एनालिसिस करके, लेकिन हाँ, कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली मेल जनरेट करे, ऐसा कुछ हो सकता है सर, हो सकता है सर। सो आप मुझे कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे तो आई कैन जस्ट ट्राई। आप मान लीजिए ये डन हो गया, अभी मैं इसको बोलता हूँ ईमेल में क्या आता है, राइट ईमेल है ना सर, यही आप बोल रहे हैं ना। अभी राइट ईमेल में राइट राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर चंद्र सिंह, है ना, चरण सिंह, चरण, CHARANSING। हाँ, राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर चरण सिंह अबाउट research collaboration in the साइबर फॉरेंसिक, field of AI in education करता हूँ सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। in this for learning purpose। देखते हैं क्या बोलता है। I am also, I mean these all things we have to keep on experimenting। तो compose is running, तो देखते हैं क्या होता है। किधर चला गया? हाँ, कंपोज इज रनिंग आ रहा है। लेट्स सी, थोड़ा और वेट करते हैं, नहीं तो और एक बार बोलते हैं। सर आपको दिख रहा है क्या? यस यस। एक बार इसका क्वालिटी क्विकली चेक करते हैं। डियर प्रोफेसर चरण सिंह, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम कृष्णकांत रॉय फ्रॉम सूरत, इंडिया। I am interested in exploring this a potential research collaboration. This in the area of this. I believe our collaboration could. This I would appreciate your opportunity to discuss possible projects. देखिए सर, इसको लेके अब ये सूरत की जगह मुझे पूना करना है। तो सूरत से तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुणे से बोल रहा हूँ। तो I'll do small module. I'll read and then edit and then this can be helpful. I mean, if you are doing so many email replies or so many administrative tasks, कहीं ना कहीं आपको माइंडफुली अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ कैसे इसको लेना है, then it is helpful. ठीक है सर, एकदम बढ़िया सर। तो मैंने सोचा कि आपको लाइव दिखाऊं, तो दैट विल बी गुड। तो आप मुझे प्रॉब्लम बताइए और मैं लाइव दिखाता हूँ। सो
चलो ये भी हमने देख लिया ईमेल। अच्छा, अभी हमारे पीपीटी में और कोई अगर आपको किसी और चीज। आप कुछ एनिमेटेड वीडियोस के बारे में बता रहे थे। हाँ सर, एनिमेटेड वीडियोस के लिए एट द मोमेंट मेरे दिमाग में आया कैनवा। आप कैनवा को यूज करके, वो एक पर्टिकुलर सेकंड्स तक फ्री बनाने देता है। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री टेम्पलेट्स आल्सो, तो आप कैनवा को एक्सप्लोर कीजिए। नहीं, कैनवा में तो हो गया सर। हाँ, क्या चैट जीपीटी बना सकता है? आप बोल रहे थे कि समथिंग न्यू इन दैट। नहीं, चैट जीपीटी नहीं बना सकता। चैट जीपीटी क्या बनाएगा, आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सब चीज बोलता हूँ, ठीक है। देखिए, चैट जीपीटी क्या कर सकता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट मी स्टार्ट अ न्यू चैट। मान लीजिए आई वांट टू शूट अ वीडियो of 3 to 4 minutes. Topic is inflation. Write script. ये सोरा सोरा इसका ही पार्ट है ना? हाँ, उसमें चैट जीपीटी में आ जाता है। ओके। राइट स्क्रिप्ट ऑफ द, देखते हैं। मैंने उसको 3 से 4 मिनट का एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने बोला है। बहुत अच्छे से वो ड्राफ्ट करके दे रहा है। वो वॉइस ओवर भी बोल रहा है, विजुअल्स देना है बोल रहा है, नरेशन बोल रहा है, क्लोजिंग सीन क्या होगा वो भी बोल रहा है। इट इज वेरी इफेक्टिव एक्चुअली। आप इसको थोड़ा रिवाइज कीजिए और अकॉर्डिंग टू योर नीड्स इसको मॉडिफाई कीजिए। इसको थोड़ा देख लीजिए कि कितना सही है कितना है। तो इसके अलग अलग लेयर्स पे आप इसको कर सकते हो, बट वीडियो चैट जीपीटी नहीं बना के देगा। हाँ, चैट जीपीटी में कुछ कुछ एक्सटेंशन हो सकते हैं जो बना के देगा, बट वीडियो डायरेक्टली आपको बना के नहीं देगा। अगर वीडियो बना के देना, यू मे एक्सप्लोर। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। अभी हमारे पास टाइम कितना है? अच्छा, टाइम हमारे पास है 12 मिनट। तो मैं आपको क्विकली, यू कैन एक्सप्लोर दिस स्क्रीन पीएल, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पाल। बट दिस इज नॉट एआई। स्क्रीन पाल में अगर आप जाएंगे, ऐसे आता है। देखिए, मैं शूट नहीं करूंगा, बट आप, मैं, या फिर अगर आप चाहो तो मैं 10 सेकंड का एक वीडियो शूट करके दिखा सकता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पाल, स्क्रीन पाल, ये इसका EXE मैंने रन किया हुआ है। एंड सो व्हेन आई ओपन, आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा उसका EXE और एक बार रन करना पड़ेगा। ये 15 मिनट तक का वीडियो फ्री में बना के दे सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका इंटरफेस है और इसमें मुझे, आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड में क्लिक करूंगा और नीचे एक बटन रहेगा स्टार्ट करने का। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीन हो गए हैं तो मुझे थोड़ा, हाँ मैं हटाता हूँ। सो वंस आई क्लिक ऑन रिकॉर्ड, मैं आपके लर्निंग पर्पस के लिए एक 10 से 20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, सो दैट इट इज रिकॉर्डेड एंड यू नो हाउ टू मेक अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वीडियो। ऑलराइट, सो लेट स्टार्ट। Hello everyone, this is Krishna Roy. Today I'm going to discuss about how to integrate technology in teaching and learning process. What are the basic steps, or how do we go about playing with technology so that teaching and learning become very effective? So first thing we have to keep in mind that for what we are using technology. That's the first step. Or what technology we are going to use, for whom we are going to use. So these all questions should be very clear. Once these questions are clear, then we can start thinking about learning new tools and technologies to create some e-content. So for now, thank you very much. Thank you for listening to me. And next video, I'll elaborate a tool. Thank you. ये ज्यादा बड़ा हो गया 37 seconds का, but ठीक है. Then you have to click on done and click on save and upload. मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, so it will be interesting for you. कि लाइव डेमो भी वीडियो का हो गया हमारा। ये कितने वीडियो बना सकता है सर? 2, 3, 4 ऐसे कितने? ऐसे तो मैं तो अभी देखना सर, ये सर 36वां वीडियो होगा कुछ तो मेरा। ये फ्री है, 15 मिनट्स तक का आप कितने भी बनाइए। ये देखिए सर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ सेव। ये शायद 36 या 37 नंबर होगा कुछ तो, 37। ये देखिए, पब्लिश करूंगा एंड इट्स सो क्विक। देखिए, अगर आप लंबा वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा पब्लिश करने में, बट इट इज
पब्लिश मीन्स ये आपके फोल्डर में स्टोर हो जाएगा. So I'll go to browse folder and 37 नंबर का लेक्चर है जिसमें कि मैंने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करी है और ये आपके सामने है ये 37. ये देखिए, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. वीडियो ऑन वीडियो आपको दिखेगा. अभी मैं भी बोल रहा हूँ और वीडियो भी बोलेगा. It's coming. Hello everyone, this is Krishna Roy. Today I'm going to discuss about how to integrate technology in teaching and learning process. So what are the basic steps or how do we go about playing with technology so that teaching and learning become very effective? So first thing we have to keep in mind that for what we are using technology. That's the first step. Or what technology we are going to use, for whom we are going to use. So these all questions should be very clear. Once these questions are clear, then we can start thinking about learning new tools and technologies to create. देखा आपको? It's so easy. It's actually so easy. But मैं अभी ज़्यादा elaborate आपको नहीं कर पा रहा हूँ because of paucity of time. हमारे पास time जो है वो थोड़ा limited. But आप you can always reach out to me. आपको मैं मेरा email ID और details दे दूंगा. अगर if whatever problems with respect to technology integration आप सोच रहे हैं, you can always be in touch with me. I can definitely try and help you out. So जितना भी whatever I know. अच्छा, अभी हमारे पीपीटी पे आते हैं. लास्ट 5-7 मिनट बचा हुआ है. लास्ट हमने Am I audible? yes मैम. सर थोड़ा मेरा छूट गया बीच में. कैन यू रिपीट द नेम ऑफ टूल विच यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन हेल्पफुल इन ईमेल राइटिंग? अच्छा, ईमेल हारपा, HARPA, हारपा, गूगल क्रोम एक्सटेंशन. ओके, थैंक यू सर. या अच्छा, अभी हमारा एक लास्ट जो मुद्दा बचा हुआ था, दैट वाज रिसर्च. मैं रिसर्च तो इज अ बिग टॉपिक, मैं आपको ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा, बट यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज ऑल टूल्स. मैं इन टूल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ. परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा टूल है. आप कोई भी टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं सर्च करने का, तो आप परप्लेक्सिटी से यूज कर सकते हैं. इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन विद साइटेशन. मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1-2 टूल दिखा देता हूँ, सो दैट इट इज लाइक गुड फॉर ऑल ऑफ अस. एक सेकेंड. तो सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ. आई विल जस्ट क्लोज ऑल ऑफ दिस. परप्लेक्सिटी जो कि रिसर्च के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है. सो मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है. आई एम थिंकिंग अबाउट AI इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, है ना? क्या चल रहा है? सो आई विल जस्ट क्लिक. तो इसका इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ ये क्यों फैसिनेटिंग है. अभी AI के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ कुछ बोलेगा. कैन यू सी? ये क्या है आप देख रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर दीज? रेफरेंसेस. बिल्कुल. ये जो लिख रहा है ये क्लियरली बता रहा है कि मैंने रेफरेंस कहां से लिया है ना? इन आवर रिसर्च साइंटिफिक वर्ल्ड दिस इज वेरी गुड. दिस इज वेरी गुड. और फिर ये प्रोबेबल नीचे के प्रोबेबल क्वेश्चंस भी दे देता है. अभी हमने पूछा, अभी वो बोलेगा स्टूडेंट एंगेजमेंट के बारे में जानना है या फिर AI कैसे इंपैक्ट कर रहा है, तो फिर उसके बारे में बोलेगा. सो दिस इज वेरी गुड वे टू स्टार्ट. ठीक है. अच्छा, दूसरा. थैंक यू मैम. तो दूसरा क्या होगा? आपने ये किया, ऑफ कोर्स ये बाकी के टूल्स आपको पता है. जेमिनी आपको पता है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ. चैट GPT आपको पता है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ. ग्रामरली भी आपको पता होगा, है. ग्रामरली आपने कुछ लिखा, उसका अगर लैंग्वेज थोड़ा ठीक करना है या फिर कंस्ट्रक्ट ठीक है नहीं है, तो वो ग्रामरली हेल्प कर सकता है. जेनी AI जो टूल है वो वो आपके साथ लिखता है. आप भी लिखोगे वो भी लिखेगा. आपने एक सेंटेंस लिखा तो वो आगे का सेंटेंस लिखेगा. ठीक सर है. एक बार बताइए इसको. अच्छा, आप मुझे बताइए कौन सा दिखाना है, मैं आपको दिखा. चलिए जेनी दिखा. जेनी. Numbers. मुझे खाली 10 सेकंड दीजिए. मैं मेरे लैपटॉप का जो चार्जर है वो लाता हूँ. जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स.
अभी मैं चार्ज चला ठीक है. So now I'm showing you Jenny AI, which you can write with Jenny actually. So let me see. I hope. चलिए. ये बहुत ही सरल है. It's very easy to use. आप ठीक है ये मान लीजिए. What are you writing? I am writing AI in higher education. ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं. And the future of teaching and ठीक है, सिंपल सा दे दिया. अभी इसको इसने बोला है कैसे देंगे, क्या देंगे. स्टार्ट राइटिंग. मान लीजिए आपको ये पहला सेंटेंस अच्छा लगा, एक्सेप्ट. उसके बाद आप लिखोगे AI in India in Indian higher education. in AI in Indian higher education. आप देख रहे हो ये ब्लू वाला उसने लिखा है. आई जस्ट हैव टू. ये देखिए आप, ये है. अभी टाइम कम है तो मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, बट आपको आइडिया आ गया हो. सो एक्सप्लोर दिस टूल जेनी AI. यस यस सर. ठीक है. अच्छा, और बताइए कौन सा दिखाना है. साइंस पेज इज गुड फॉर लिटरेचर रिव्यू. मान लीजिए मैं आपको एक मेरा फेवरेट, मैं सारे यूज नहीं करता हूँ, बट एलिसिट यूज करता हूँ. एलिसिट, ELICIT, elicit.com. अभी मैं इसमें यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, AI इन हायर एजुकेशन. अब मुझे देखना है क्विकली, मेरे को लिटरेचर रिव्यू करना है. सो आई विल जस्ट पुट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन. वो क्या कर रहा है देखिए आप. ये क्या करता है, आपको टॉप 4 पेपर के लिटरेचर रिव्यू खुद लिख के दे देता है. यहाँ पे लिख के दे देगा, और बाकी नीचे पेपर्स और उनके समरी. ये देखिए, ये दिस इज जस्ट लाइक लिटरेचर रिव्यू. देखा आपने, दिखा आपको. और यहाँ पे इसने क्या किया, सारे जो रेलिवेंट पेपर्स हैं उनको लिस्ट कर दिया और उनके समरी लिख दिया. आप लोड मोर करते जाइए, वो और 10 पेपर देगा, और 10 पेपर देगा रेलिवेंट फील्ड के. ठीक है. तो दीज ऑल आर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये एक एक करके नहीं दिखा पाया, बट अगर देखते हैं, अगर कोई कल मुझे टाइम मिला, कल मैं आया तो मैं आपको बाकी का एक्सप्लेन करूंगा. बट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. अभी आई एम श्योर बहुत लोगों को घर जाना होगा, या फिर और आपके पास अभी 6 बज गया है. बट इफ यू हैव एनी क्विक क्वेरी, आप बता दीजिए, अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग रिमार्क्स. एनी क्विक, कुछ क्वेरी है, कुछ है, मैं तब तक आई जस्ट सी द चैट. हार्पा का लिंक कहाँ से है? आई एम नॉट गेटिंग हियर इन गूगल क्रोम. मैं ट्राई करता हूँ मैम. हार्पा. मैम ये वाला है, आपको दिख रहा है. अच्छा अच्छा, ओके, यहाँ से जाना है. ओके ओके, वी हैव टू टाइप इन गूगल इटसेल्फ. हाँ, तो मैम मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ. you'll get it. यहाँ जाने के बाद आपको वो रन करना पड़ेगा एक बार. ये देख रहे हैं आप, रिमूव में मैंने रन किया हुआ है, तो मेरे इधर रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है. आपके उधर आएगा रन या फिर ऐड, ऐसा करके. ठीक है. प्लीज प्लीज प्लीज. एनी अदर क्विक क्वेरी? All right. Now, so these are some of the useful tools which अरे कितनी वास्ता, आई एम वेटिंग यू. I recommend to you. But quick concluding statement. So आप जब whenever you use AI tools like ChatGPT, Gemini or Meta AI, it can help in the process of teaching and learning. But always remember that you need to write the final content, final draft. Never take content which is produced by AI tool as it is. As word of caution. You need to go through and edit according to your needs. Means students को क्या अच्छा लगेगा. Make it a point. आप इसको लिख के रख सकते हैं. दूसरा, excessive use and over dependency in technology or AI technology is not at all good. You need to consciously
decide how much technology is required at what level. Okay. Third and the most important point, technology is making our life faster. मतलब हमको सब कोई प्रोडक्टिव बनाना सिखा रहा है, फास्ट चलना सिखा रहा है और भागना सिखा रहा है. कोई हमको ये नहीं सिखा रहा है कि स्लो कैसे होना है. So we need to slow down. We need to know how to slow down. For that, I would always recommend that आप कहीं ना कहीं अपना कुछ ऐसा कुछ टाइम निकालिए जिसमें कि you can sit calm और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में लाइए. अगर आपको नहीं लाना है, नो प्रॉब्लम, बट सिट काम, जस्ट सिट काम. वो टेक्नोलॉजी डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप एडिक्टेड हो गए हो, एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेस. मैंने कुछ कुछ और दिए हैं पीपीटीज में, ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एल्स आई विल शेयर द पीपीटी विद ऑल ऑफ यू. तो आई होप, मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा इस सेशन में. चूंकि हमारे पास टाइम कम था, हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए. अगर मैं कल आया तो आई विल डेफिनेटली मे बी एक्सप्लोर मोर टेक्नोलॉजीज, बट these are my numbers, email IDs. I am typically available from 6:30 to 7:38. You can be in touch with me. अगर आपको कोई भी लगे कि you want some suggestion or support in terms of technology integration, I would be happy to help you. Thank you very much for listening to me, and take care. और आपको कल मॉर्निंग सेशन में you have to upload all the materials in Google Classroom. So our instructor will tell you. Thank you very much. You can maybe unmute and say bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye, This is sir. roll number 25. Just presenting formal vote of thanks, sir. This was the really wonderful Bye, lecture, very nice genuine lecture. and this was really a master in AI lecture. So once again, thanks a lot from Bamboo University, sir. So keep in touch, sir. Thank you, sir. Absolutely, my pleasure, my pleasure. Thank you. Sir, may I talk, sir, please? हाँ मैम बोलिए. Hello, sir. Sir, मुझे एक out of I'm box here for 2 question more था. minutes. So those who want to leave, actually हाँ. session is closed, but I'm here to take queries, some of the queries. Yes, ma'am. बोलिए. Sir, it is not a query, technical query. I just it is out of box query. मुझे क्या पूछना था सर, आपने हमें रिफ्लेक्शन सिखाया था लास्ट लेक्चर में. उसके एक अपने वीडियो में एड पजल में क्रिएशन ऑफ रिफ्लेक्शन स्पॉट करके एक्सेल शीट में वो जस्ट पेस्ट करने को बोला था. Right. Am I, sir? Huh? Yes. So we have done that assignment, but on that day we were not on the Google Classroom. On the next where we joined the classroom, sir. तो classroom पे वो assignment missed बता रहा है सर. और वहाँ के एक्सेल शीट में ऑलरेडी हमने किया हुआ है. आपके लिंक पे जाके वो जो एक्सेल शीट था. Are you getting my difficulties? Absolutely, ma'am. मैम वो मैटर नहीं करेगा. So मैंने क्या किया है मैम, मैं आपको बताता हूँ. So what I have done, I have integrated that sheet in Google Classroom. ठीक है? तो yes, हाँ. बेसिकली उस गूगल क्लासरूम में अगर आपने लिंक उस गूगल शीट में अगर आपने लिंक डाल दिया है, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन मैम, कोई प्रॉब्लम. मैंने उसको अपलोड कर दिया गूगल क्लासरूम में. मे बी वो दिखा रहा होगा कि नॉट सबमिटेड, बट वो है. वो मैम कोई टेंशन मत लीजिए. वो कल जो हमारे इंस्ट्रक्टर आएंगे ना, वो आपको यही सब अपलोड करवाएंगे. अगर किसी का मिसिंग है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, यही सब होगा फर्स्ट सेशन. सर अभी लास्ट में आपने कुछ असाइनमेंट दिए क्या? अभी जस्ट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए पूछे. नहीं मैम, इसके लिए कोई असाइनमेंट नहीं था. नहीं ना, एआई के इसमें नहीं है ना? नहीं, सिर्फ वो सुधा मैडम का जो एआई के इसमें नहीं सुधा था. मैडम का जो सेशन था यस, अभी प्रीवियस सेशन था, उन्होंने वो एलएक्सी कंस्ट्रक्टर करने को बताया था. तो वो जो टेम्पलेट उन्होंने दिया है वो क्लासरूम पर ही अपलोड करना है ना? हाँ, वो गूगल पे ही अपलोड करना. फॉर दैट गूगल पे आई एम श्योर असाइनमेंट होगा शायद. आप देखिए, क्रिएट होगा. अगर क्रिएट नहीं है तो आई विल क्रिएट. आप उसको रखिए, कल मॉर्निंग सेशन में अपलोड कीजिए मैम. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. No problem, ma'am. No problem. Pleasure talking to you. Any other query, any other doubt, please feel free and ask. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.
Have a wonderful evening. See you tomorrow. Bye-bye. Gaurav, okay, thank you.